We are also going live on YouTube. So if there are any friends of yours, ask them to check out on YouTube as well. Are you anybody amongst you is carrying a mobile right now? Do you have a connectivity? Mobile connectivity. Just check whether it's available online. It's youtube.com. You can check for Rishi Pisar live. Hello, everybody. I welcome you all at Impetus. And this being the first time we are doing a hybrid kind of session,
There will be some hitches initially while I'm interacting with you. Maybe till the time we get used to this infrastructure. Live session, there should not be any problem. Okay, but then you have an option. You have an option that in case if you cannot make it, like it's raining today, you can just watch it from home. There is not much of a delay that I see. I can see myself immediately over here. So there is not much of a delay. Could you connect it? It's visible, no? Okay, there is no lag. Okay, you can just turn it off since you are there for the live session. So the links will be shared with you. But before I go ahead with the details about the course and details about myself, let's have a quick introduction. Impetus was founded in 1999, and since 1999, we are involved in software training and development. And we have been authorized partners for various organizations. For those amongst you who may be from mechanical or civil background, you may be very well aware of Autodesk. There are so many products that they have, right from AutoCAD and number of other products that they have. And we had been partners with them for the longest period of time. We are also partners with Oracle. Now, Oracle happens to be, a lot of time people know Oracle only in terms of database. Oracle means database. That's not the case actually. There are 153 different major products that Oracle has. Java today is also under the house of Oracle. MySQL is under the house of Oracle. So there are a lot many products that Oracle takes care of. So we are partners with Oracle for two products. The first was the DBMS software, that is Oracle as a database, and second was Java as a technology. So we are partners for them with the two products. We are also partners with PTC. One of the most popular software that PTC has right now is Creo, especially meant for mechanical students. So anybody amongst you who comes from mechanical background? Okay, so Creo you must be aware of. So Creo the PTC is the creator of Creo, and we have been partners with them as well. And something that should be of your interest, we are the first training institute in entire Pune to be authorized by Pearson for international certification in C++. I myself am certified. And likewise, we are the first one again in Pune to be authorized to conduct international certification for Python programming as well. So we are a Python institute, we are a C++ training institute as well. Now, when I say we are Python and C++ training institute, what do you mean by that? Students who pursue the course over here, tomorrow, if you land up into a company, let's take an example, you land up into NVIDIA. Now, NVIDIA extensively works on C++. Any low-level system that they're working on, graphics and other things, they will be on C++. They would expect you to have a certification. There, the Pune Uni certification will not be that valid. They want your expertise in C++ as a language, as a technology. There are international certifications available. You can appear for that international certification. Even you can go outside and you can directly appear. But since you have pursued the course over here, you have some advantages. First, the syllabus of international certification will be covered over here. That's first advantage. So you do not have to join any additional coaching for certification exam preparation. There are a lot of people who conduct training program for certification. We teach the course to such an extent. I personally believe when you learn a language, you should be in a position to give the exam as well. Why should there be two different courses? Language course different and certification course has to be different. That's not how it should be. So we prepare you for international certification. So a lot of times you will find the depth of the subject that we cover is quite high. And there are reasons for it. Say I tell you 10 points. In your syllabus, you may have, if you listen to the 7 more points, you may find them a bit advanced, but उसमें से 2-4 तो समझ में आएंगे additional. So it's always better to know more than just sticking back to your college syllabus. Right from our inception, we have never stuck to college syllabus. We always look into what is required in the industry. Since we being into development, I also being into development, we understand the industry requirement, and so we cover what is required in the industry. After this course, am I going to promise that you are going to be master in C++ or in Python course that you have come for? How it can be? It has taken me 20 years to master that technology, and even today I still keep on learning new things. But I'll definitely prepare you to such an extent that whatever is expected out of fresher in the industry, you are well aware about that particular thing. So you'll be confident. You'll know how to learn new things as well. तुम्ही करा ना admit. Huh? So I'll make sure all the latest features which are available, we'll work on latest softwares.
I'll explain you, and I'll be using all the latest methodologies that are expected to be used. We follow standards which are expected in the industry. So it shouldn't happen when you go into the industry. There is one big complaint that industry people always make. अरे इंजीनियर्स का कोई फायदा नहीं है, हमें जो चाहिए उनको वो आता नहीं है. That's a common statement that they make. We are trying to bridge that gap. You as my student, just give me a minute. You as my student, I don't want to hear such kind of complaint from anybody amongst about you. That अरे इन बच्चों को जो हमें चाहिए वो नहीं आता. Every industry will have their specific requirement. You may land up into industry, a company, software company that may be working on one set of skill sets. You may land up in, it's the same technology, but the skill set will be different. But the basic things that are required to be known for a developer, some basic practices, how to write the code, how to test the code, how to build the application, what are the various tools that we should use, what are the various naming conventions that we should follow. I'll make sure that you're prepared for those things. So you'll not have that kind of lack of confidence. Are, वहाँ क्या करना है? I'll give you a feel as to what is required. The kind of projects that we'll take up will prepare you for, will make you industry ready. So that is something that we'll be doing. And that is precisely what we do as the Python Training Institute as well. Nikhilesh, can you see the presentation? No, sir. We can see a video. It's only me, what you can see? Yes. Is the presentation visible? Yes, sir. Now it's visible. Okay. And is Tally Academy visible? The fourth logo? No, I can see only Python Institute and C++ Institute. Great. Okay. So we are authorized training center for a variety of technologies. This was for something of your interest, but maybe some of your friends may be from commerce background as well. We are also Tally Academy. So we also conduct certification programs for Tally program as well. So Tally being an accounting software, one of the most widely used accounting software. A brief about myself. I am Rishikesh, and I am one of the founders of this institute, one of them. Okay. And some highlights of my career. I have been I was selected as a moderator for Purdue University. It's one of the most renowned universities in the world. And currently, I'm also associated with Bharati Vidyapeeth, University of Pune for post-graduation courses as well. And I have 20 more than 20 years of experience when it comes to training and development. Okay. And I'll be conducting this course for you. As I told you earlier, it's a blended course. You have an option of attending this course online, or you can, whenever possible, you can come physically in the classroom. Physical attendance is something that I would love to. It's after 1 year I'm seeing somebody in the classroom. I'm also bored sitting in front of the camera and teaching you, talking to the camera for last 1 year. Today I feel like I'm back home. Something is happening. So I should thank you all for you making for the classroom. Okay, because more than the students, even me and my other staff were eagerly waiting to address the students, see the students in the classroom. So good to see you. I would have been conducting a session even if one single student had turned up. Now, good to see many of you have turned up. That's very encouraging for me. And we'll take the precaution. Okay, we have enough big classroom so you can maintain social distancing. That's what the government says. That's what we should also take precaution since there is a possibility over here. We have enough big classroom. So that's a brief introduction about myself. And today we start with Python. Now, there are many of them who have joined us online as well. Okay. Yes. Monica madam, login,
Admit those whom I don't. I will not be admitting any student. You please admit. Okay. So for me also, there will be some kind of switching. It may take some time for me to adjust. But anyway. Nikhilesh, do you also see me on the screen? Yes, sir. I'm also visible? Sure? Yes, sir. Okay. It's only me who I cannot see myself. Okay. Not an issue. So let's begin with Python. Let's begin with Python. Introduction to Python as a language. Now, when you hear this word Python, other than the Python in Amazon or the Burmese Python, what comes to your mind? What is Python? Other than that, I said, उसे छोड़ो, वो Burmese Python छोड़ दो, वो छोड़ के क्या आता है आपके दिमाग में? What is Python? It's a hardware. It's a so Marathi is also a language. It's a coding language. So Marathi is also coding language. ना त्या असे काहीतरी आपण अळी सारखं असं करतो, अळ काढतो, काहीतरी करतो. कोडच आहे ना. Yes, those who are online can also respond. It's not like only those are in the classroom has to respond. What was the question? My question is, what comes to your mind when you hear about Python? What is your impression about Python? What is Python? It's an object-oriented programming language. It's an object-oriented programming language. Who was that? Atharva Kulkarni. Atharva says it's an object-oriented programming language. So tikde online. Okay. Maybe I'm yet to figure out. आपण असं काहीतरी प्रोव्हिजन करू की तिकडून विचारलेला प्रश्न तुम्हाला पण ऐकू येईल. So that you will also be in tune. But others, till the time I don't figure out. Today itself I was struggling how to do those things. Yesterday, 2 days back, I did the first live stream, and today we are doing this hybrid kind of thing. So we'll figure it out. And few of my students are very smart. They give me suggestions. So asa kuru shakto bara ka, and then we did that. So I expect we'll find out. So I'll put a mic or speaker or something, so you can also hear what he's saying. Now I'm hearing over here. So Athar says it's an object-oriented programming language. Okay, we'll check whether what Atharva has said is correct or not. What Atharva said, I asked what's a program, what is Python? He says it's a programming language. You say it's a language. Atharva added to it saying it's a programming language. Okay, it's a programming language. Both of you are right. It's a language. Very true. It's a programming language. All the more very true. And when he says object-oriented language, yes, it is true. But none of these answers are complete. अभी ये complete क्यों नहीं है? We'll explore as we go ahead. Python is something which is very special. Object-oriented की अगर आप बात करो, तो first thing that comes to mind is like C++, Java, and those things comes to our mind. Okay, you may have also had some introduction in FPL वगैरह. नहीं, most of you are from first year, second year. Yes, sir. First year. Okay, here there are first year. आप लोग first year. बाकी second year. तो FPL में आपने सुना रहेगा object-oriented languages ये वो you must have heard about them. Okay, but Python is something special. Now, what is special about Python? We'll understand. So Atharva's answer is correct. What's your good name? Abhishek's answer is also correct, but both of them are incomplete answers. So we'll understand. So what is Python? So as they are rightly identified, it's a programming language. But what exactly do you mean by programming language? I'm taking some basic stuff. Let's not jump onto Python as a coding the very first day and then get tensed about it. Let's have some basic background. I want you as my student. I'm going to spend 3 sessions in the introduction. आप सोचोगे 3 session introduction क्या करने वाले हैं? I'll tell you there are many programmers currently in the market who know how to write code in Python. But वो 2 लाइन लिखने पे ये हो जाता है, कैसे होता है मालूम नहीं, क्या होता है मालूम नहीं, कहाँ रन होता है मालूम नहीं. Python में और C के difference क्या है? They do not know. I do not want you to be such students who only know the command. Command fire करेंगे, output आएगा, कैसे आया मालूम नहीं. कल जाके फाइन ट्यूनिंग करना है तो कैसे करना है मालूम नहीं. What is happening in the background? How is Python different than Java and C++? If you do not know, no point in learning Python. If you have come down to learn Python, let's understand it in and out. Exactly run कैसे होता है, everything we need to understand. So 3 sessions will devote only for introduction. So in that case, I'll give you today it will be more about what it is, what impetus is all about, some basic stuff. In the later session, I'll actually start off with Python. How Python works, that's what we need to understand. Okay, how Python provides those features for which it is most widely used in the market today. क्या है ऐसा स्पेशल में और कैसे वो स्पेशलिटी वो प्रोवाइड कर सकता है, that is what we need to learn. So when you talk about programming language, what is a programming language? It is just a set of keywords and grammar. Right now I'm speaking to in English. So I'm forming some sentences for you to communicate with you, correct? I'm communicating with you. Either I was speaking sometimes back in Hindi and now I'm speaking in English.
So while I'm speaking in English, I'm making use of some words which are present in English. That's the vocabulary of my language, the words that I use. So keywords are vocabulary for that language. The office was closed for 1 year, so the equipments are also getting used to. Okay. Sorry for the disturbance, but just bear with me. It's getting automatically switched over. Here we are. We are back. अथर्व प्रेझेंटेशन दिसतंय ना? नाही सर, नाही दिसत आहे. नाही दिसत. नीट नाही दिसतच नसेल बहुतेक. Is it visible, अथर्व? Yes sir. What is visible? What is a programming language? बाकी कुछ नहीं ना? नहीं. Okay. There are multiple screens. So I just need to check it out. वो क्या देख रहा है? Otherwise, I am under impression he's seeing something और आप लोग अलग देख रहे हो. He is looking at different. 3 different screens. आपको जो दिखाई दे रहा अलग है, मुझे जो दिखाई दे रहा अलग है. So I just need to cross check. So we have talked about Python is a programming language. I talked about English as a language. I said when I'm speaking to you, there are some sentences that I'm using to communicate with you. ये sentence कैसे form करना है इसकी भी कोई rules है. There are some grammar that is there, or I can just take up any word that I know in the English vocabulary and I'll just join them and the sentence becomes no. There are rules as to how to. Even if you write a sentence in English, what do? You end that sentence with a full stop. You start the first letter with the uppercase letter and so on. So there are some rules. So every language has its own grammar. So when I say every language has its own grammar, programming language has their own syntax, rules as to how to create an instruction. Plus, while I'm writing those instructions, just because अरे आपने C++ किया था and you remember some C++ command and you start using it in Python, not allowed. Every language will have its own set of. Right now, I'm doing something very wrong. 1 or 2 sentences I'm speaking to you in English, and between I'm switching over to Hindi. Now that's not something which is available in programming languages. If you're working in Python, you'll have to use commands which are available only in Python. If you're working in C++, every instruction that you write will have instructions which are only from C++. You'll not like do one thing like this, one line from Java, another line from C++, and third line from COBOL, and fourth line from Pascal. That will not work. So when you write a program, you need to be aware of the commands which are available in that language. So when you talk about programming language, it is a set of keywords and the grammatical rules that allow programs to write instructions that can execute. That means over here, we are not using this command language Python to interact with humans. It's not a natural language like Hindi, Marathi, Tamil, and so on. No, it's not a natural language. It's an artificial language. This artificial language is used to get the work done from the machine. And which machine are we talking about? We are talking about computer as the machine. Actually, any machine which has a microcontroller, microprocessor, some kind of intelligence, we can talk to that machine. We can interact with that machine. It can be any device. It just has to have some processing power. थोड़ा बहुत भी processing power है, हम उसके साथ interact कर सकते हैं. Nowadays, your tube lights and bulbs have also become intelligent. अगर वो Philips का ad देखते हो, तो intelligent lighting वगैरह. So intelligence is everywhere now. So we can connect to the machine. They need to have some kind of processing power. जिसके पास थोड़ा बहुत भी processing power है, हम उस device के साथ interact कर सकते हैं. We can do with programming languages. So these are artificial language. A natural language, Hindi, Marathi, Tamil के जैसा नहीं है. For us to communicate with humans, it is to use to communicate with the machines. Machines के साथ connect करना है. और machine कौन सा है? Typically computer. और इस हमारे लिए computer क्या है? जिसमें microcontroller, microprocessor कुछ तो है, वो हमारे लिए computer है. Need not be the computer that you see over here. मेरे सामने एक laptop रखा गया है अभी. It is not. This is traditional kind of device. आपके पास एक microcontroller है, मेरे लिए वो भी computer ही है. Because I can interact with it. I can interact with it. तो जहाँ कहीं थोड़ा भी कोई processing power है, to interact with that, what we'll have is this programming language. Programming language define vocabulary and set of grammatical rules for instructing a computer to perform a task. यानी using this language, we'll get some work done from the computer. Using this language, we'll get some work done from the computer. And to get the work done, we need to communicate with the computer, and not using English, Hindi, Marathi. We'll communicate with the computer in the language that the computer understands.
and that is nothing but a programming language. There are so many languages which are there in the market. Any wild guess as to, if I ask you, what's your good name? तृप्ती, कितने लँग्वेजेस रहेंगे मार्केट में प्रोग्रामिंग लँग्वेज? गेस थोडी ना, आपल्याला मला पण एक्झॅक्ट आकडा माहित नाहीये. आय एम नॉट आस्किंग यू द नेम्स, काउंट. सर 5 असतील, सर 15 असतील, 7 असतील. हाउ अबाउट एनी वाइल्ड गेस एनीबडी वांट्स टू मेक? लाउडर. हंड्रेड्स में कितना भी हंड्रेड्स होता है, एक नंबर होता है. जैसे सेड 7, गुड. कहां से आया मालूम नहीं, बट 7. आप बताइए एक नंबर बताइए. 10. अरे 100 से डायरेक्ट 10 पे आ गए. आपका 100 का क्या ऐसे ही बोल रहे थे, ऐसे थोड़ी ना होता है. 100 क्या तो 100 के आसपास हो जाइए गए तो. यस, अदर्स देयर. व्हाट्स योर गुड नेम? रजनी. टेल मी योर काउंट. 150. ओके. देयर आर मोर देन 2000 लैंग्वेज विच आर देयर, एंड डोंट आस्क मी द एग्जैक्ट काउंट. हर दिन नया लैंग्वेज आ रहा है, बट देयर आर मोर देन 2000 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच आर देयर. ओके, दे आर कॉम्पिटिंग विथ नेचुरल लैंग्वेजेस. आपने जैसे मराठी तमिल का काउंट बढ़ते, लैंग्वेज अलग अलग है. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑल्सो फार टू मी. A to Z सारे लैंग्वेज है. ओके, आजकल के डेटा साइंस में तो आपने वो R भी सुना रहेगा, D भी सुना रहेगा. देयर आर सो मेनी लैंग्वेजेस, सो मोर देन 2000 डिफरेंट लैंग्वेजेस. तो छोड़ दीजिएगा लैंग्वेज का नाम याद रखना. 7, 150 कहीं नहीं नजदीक. हम लोग 2000 के ऊपर लैंग्वेजेस है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. अर्ली डेज आई टेल यू, 2 decades बिफोर आई स्टार्टेड लर्निंग प्रोग्रामिंग, मेरे से भी 2 दशक पहले, आदि 2 decades बिफोर, almost every university used to create their own instruction set. हर एक यूनिवर्सिटी का अपना खुद का लैंग्वेज भी हुआ करता था. There was a time, okay, and that was horrific. यानी आप अगर कैम्ब्रिज में पढ़ रहे हो, you will under some professor, he will teach you one way to interact with the machine, and you are at University of Mumbai, there that thing will not work. यहाँ दूसरा लैंग्वेज, and that was bad. That was bad. 50s और के बाद, 1950s के बाद, after the Second World War, standardization हो चुका है. So we know fixed languages. अभी COBOL है, C है, C++ है. Life is easier after that. Life is easier after that. Before that, like everybody had their own instruction sets to get the work done. तो इसमें से आप Python पढ़ने क्यों आए हो? इसमें से देखिए यहाँ Fortran है, Algol है, Perl है, Logo है, Lisp है, APL है. There are so many of them. A, B, C, D सारे हैं. Python ही क्यों पढ़ने आया? Because it's one of the major language. Yeah, somebody says, who is that? Those are online. When you say, just tell your name and then speak out, so I can immediately understand. कौन बात कर रहा है? अथर्व. Louder. अथर्व. अथर्व. Online पे सिर्फ अथर्व ही बात कर रहा है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? Okay. Atharva says it's one of the major languages which is there. Okay, that's a very general answer. I remember Atharva के आंसर से मुझे एक मेरे कॉलेज का दिन याद आया. आप भी ऐसे ही करते रहोगे. जब किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम ना, तो फिलर्स डालते थे. वन ऑफ द इंसिडेंट्स, आई जस्ट एक स्टोरी बताता. स्टोरी मींस रियल इंसिडेंट दैट हैपेंड विद मी. आई वाज इन माय ग्रेजुएशन रहूंगा, 12th में रहूंगा. आई वाज एट फर्ग्यूसन कॉलेज. Unfortunately, my practical table was next to Professor Chitra, who was our vice principal. Okay? Batch का भी इंचार्ज वही, it's very senior guy and well renowned in Pune. So Professor Chitra's desk and my table next to each other. तो कोणाशी गप्पा मारता येणार नाही, काय करता येणार, अख्ख्या practical professor शेजारी. And one fine day he was checking our answer sheets and he said, Deshmukh, come here. I said, sir, काय झालं? I did not do anything. अरे come here, he said. I said, what? This answer sheet. And he told me, while you read this answer sheet, ये किसका ये नहीं पढ़ना है, just read the answer. The question was, what is ionization energy? Atharva's answer on that. Question was, what is ionization energy? And that fellow, whoever paper it was, had written one para, half a page, अपना exam sheet. And what was it? Ionization is a very important energy. बरोबर है. Okay, it's a very useful energy. बरोबर है. आता त्यात काय चुकीचं आहे? But in that entire para, he did not answer what is ionization energy. It's very important, it's very useful, it's used everywhere, and there are a lot of applications of it. तो अथर्व आपल्याला फिलर्स नाही द्यायच्या, आधी उत्तर दिलं तर तसं सबस्टन्स द्यायचा आहे, फिलर नको आपल्याला. ओके, सो इट्स क्या कहा अथर्व आपने? पावरफुल. क्या कहा था? हाँ, मेजर लैंग्वेज, वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज. ये फिलर्स है, लिखने होते हैं फिलर. इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आर वेरी बैड एट राइटिंग फिलर्स. दे राइट पॉइंट वाइज, एंड देन व्हेन यू गो फॉर पीजी वगैरह मैनेजमेंट के कोर्स में जाओगे ना, वहां सिर्फ पॉइंट नहीं चाहिए, मैटर भी चाहिए, वजन पण पाहिजे पेपरला. एंड इंजिनिअरिंग स्टुडंट्स लाईक 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 डझंट हेल्प. मध्ये आधी असे फिलर पण टाकायचे, अथर्वने सांगितले. ओके, व्हेरी इंपॉर्टंट, युजफुल, व्हेरी पॉप्युलर, हाय डिमांड इन इंडस्ट्री, वेर यू आर नॉट टेलिंग एक्झॅक्टली व्हाट इज. ओके, एनिवे, बट अथर्व इज नॉट रॉंग, ही इज करेक्ट. इट इज व्हेरी पॉप्युलर, सो यू आर हियर टू लर्न.
You may not be aware as to why is it popular. That's my duty to explain you why is it popular. Why it is a choice of industry, I'll help you understand. And why does it make sense for you to invest your time and money and efforts in learning Python is what I'll explain you. Because ये important है, syllabus में है, सब कुछ भाई हर कोई बात कर रहा है. Industry क्यों use कर रही है Python? Why not stick to the traditional language like C++ है, Java है, वो भी तो है. तो Python का इतना growth क्यों हो रहा है? Where does Python stand today? We'll discuss in detail as we go ahead. So, brief introduction to Python. This is the fellow, okay, who is given credit for development of Python. Single-handedly अकेले बंदे ने Python लिखा as a university project. ये यूनिवर्सिटी से स्टार्ट हुआ. ऐसा कोई दिमाग में नहीं था कि एक सेपरेट लैंग्वेज बनाना है, इंडस्ट्री में यूज करना है, nothing like that. It just started with a project and it became a popular language. Correct? So, is Python a new language or old language? Old language. Java से भी old. C++ से भी old. नहीं. उसके बाद किसके बाद? जावा और C++ के बाद. Okay, Java was introduced in 1996. मेरे हिसाब से पब्लिकली जावा 1996 में आया. आप में से कोई तब पैदा भी नहीं हुआ रहेगा. नहीं ना? So it was way beyond. I started teaching in 1999. Okay, so I have enough of experience than more than your what your age is. Okay, anyway. And to your surprise, Python was designed even before Java. It's a very old language. It's a very old language. It was introduced in 1990. Long time back. Java became public. The first public API Sun Microsystem के पास Java था. वो 1996 में Java 1.1 market 1.0 market में introduce हुआ था. उसके 6 साल पहले Python was introduced. It's a quite an old language. And mark my word, when I started my career in teaching, in development, we felt Python is a dead language. I had also learned that language long time back. Early days मैंने भी पढ़ा था. सोचा ये तो dead है यार, इसका कोई scope ही नहीं है. And last 10 years, we have been forced. Last 10 years, I'm saying, last 10 years, we have been forced to revisit this language, rather reskill ourselves and again explore this language. यानी बीच के 10-15 साल ऐसे थे जहां हमने Python की तरफ मुड़ के भी नहीं देखा. And now it's like you cannot do without Python. So it's not about language नया है पुराना है. Another area, आजकल मार्केट में कौन से टर्मिनोलॉजीज बहुत पॉपुलर है, स्कोप जिस इंडस्ट्री में बहुत स्कोप है, ऐसा कौन सा दूसरा टर्मिनोलॉजी आपके दिमाग में आ रहा है लैंग्वेजेस के अलावा? या ऑनलाइन भी है जो भी आप आंसर दे सकते हैं. AI/ML. AI/ML. Nikhilesh is saying AI and ML. I hope everyone has heard of it. AI stands for and ML stands for machine learning. Everybody knows about it. Okay. And आपको मालूम है AI/ML में AI में भी सबसे पॉपुलर या widely recommended language कौन सा है other than Python? Anybody? Java तो यूज किया जाता है, बट पॉपुलर कौन सा है? Java इतना पॉपुलर नहीं है वहाँ, बट यूज तो करते हैं हम लोग, बट नॉट दैट पॉपुलर. Yes, anybody? AI के बारे में किसी को पता है? Which is the popular language for AI? TensorFlow. TensorFlow is not a language. It's more of a platform. It's an IDE. It's a platform. It's a platform. Okay, language की बात करें तो कि आपको AI में कुछ काम करना है तो कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जिसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए? Any guess? I'll give a hint to you. Embedded C तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए. I mean, रहेगा C चाहिए. Embedded C becomes very specific. Okay, knowledge तो चाहिए उसका. ML में भी चाहिए. Okay, but then not like to that extent. Okay, one language that you like it or you do not like it, you will have to learn it, is a language called as Lisp, Lisp. Okay, आप में से कितने लोगों ने सुना था Lisp के बारे में? Raise your hand. Okay, it was introduced around 40 years back. तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक आज लैंग्वेज पढ़ा आपने वो आउटडेटेड हो गया है एंड देन उसके फ्यूचर में कोई स्कोप नहीं रहेगा. ऐसा नहीं होता है. आई लर्न COBOL इन माय कॉलेज डेज. बाय द टाइम आई पास्ड आउट फ्रॉम द कॉलेज, आई रियलाइज दुनिया में कोई COBOL यूज ही नहीं कर रहा है. ओके, वर्ल्ड हैज मूव्ड टुवर्ड्स जावा एंड अदर थिंग्स. जावा आ गया था, ये पाइथन आ गया था बाय द टाइम आई पास्ड आउट, अर्ली 90s. एंड देन आई वाज लाइक, अरे द लैंग्वेज दैट आई लर्न इन एकेडमी वाज Fortran, Pascal, COBOL. Okay, and DBase में भी I learned something like DBase 2, Fox Pro. अभी ये तो नाम सुने भी नहीं रहेंगे आपने. बाहर आने पर these are also like nobody wanted those skills. And I felt अरे ये तो हमने कोर्स करके कोई फायदा नहीं है, कुछ इसका इस्तेमाल ही नहीं है. And came year 2000, Y2K प्रॉब्लम आ गया. My COBOL skills which I had learned, which I thought nobody is going to ask me for that particular skill, we as a COBOL developer are high in demand. Suddenly एक प्रॉब्लम आ गया and suddenly COBOL developers were high in demand. And the next 5 years, all of us made very good money working on COBOL, solving the problems for the customers. The point that I'm trying to make is,
when you invest your time, learn the technology in detail, you never know which application area in future you will find in applications of that language. तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ इस लैंग्वेज के, इस कंप्यूटर वर्ल्ड में कि अरे ये आ गया, ये आउटडेट हो गया, इसकी मुझे फ्यूचर में जरूरत नहीं पड़ेगी. You will constantly have to learn newer and newer technologies. That for sure. ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, नए नए टेक्नोलॉजीज पढ़ना ही पड़ेगा. बट जो पढ़ रहे हैं वो परफेक्टली कर लीजिएगा. You will have opportunities knocking your door any point of time. These languages, the languages that were introduced, कोई सॉफ्टवेयर उसमें क्रिएट किया जाता है तो एक दिन में नया लैंग्वेज आ गया इसलिए उसे उठा के बाहर नहीं फेंक देते हैं. मार्क माय वर्ड, 1960s का लैंग्वेज है कोबोल, 1960 का. Even around the time your father mother must have born. Okay, 1960s. That is the time. 1960s का language है. Big companies, insurance companies and other companies are still using softwares which are created in COBOL. अपने यहाँ Capgemini जैसी बड़ी सी कंपनी है. They have mainframe machines and they have big teams working only on COBOL even today. कोई नया सॉफ्टवेयर नहीं बन रहा है उसमें COBOL. अरे बट पुराने सॉफ्टवेयर को मेंटेन करने वाले भी तो लोग चाहिए. वो सिस्टम थोड़ी ना स्क्रैप कर सकते हैं कोई. और इंश्योरेंस वगैरह इतना रिस्की मैटर है कि अगर एक आध कंपनी 50 सालों से 60 सालों से 70 सालों से मार्केट में है, इंश्योरेंस कंपनीज दे आर देयर ना फॉर इयर्स टुगेदर, दे आर देयर इन द मार्केट, करेक्ट. एक आध प्रोग्राम में आपने जावा में उसे ट्रांसलेट कर रहे हो, एक आध बग आ गया, द कंपनी विल हैव टू वाइंड अप. तो कोई सॉफ्टवेयर रिलायबली काम कर रहा है ना, दे विल कंटिन्यू टू वर्क ऑन दैट सॉफ्टवेयर. तो कोबोल के 1960s एंड 70s में लिखे गए सॉफ्टवेयर आज भी यूज किए जाते हैं, जस्ट दैट वी आर नॉट अवेयर. हाँ, नया सॉफ्टवेयर भले ही कोई लिखता नहीं रहेगा कोबोल में, बट मेंटेनेंस की तो जरूरत है. So today's generation, when so many new softwares are designed every now and then, so whatever is the technology that is used over here, maintenance of the technology for another 10 years. तो अगर आप Python अभी पढ़ रहे हो and you feel like अरे Python तो 2-4 साल में आउटडेट हो गया, नया कुछ आ गया, इसका मतलब will go waste. So whatever you learn, make sure that you are expert in them. You know it very well, because that will always give you opportunity to make a successful career. It could so happen throughout your life you will work in one technology. आजकल वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, मार्केट में बहुत ज्यादा डायनेमिक है, बहुत जल्दी चेंज हो जाता है. स्किल सेट जो हमारे पास है, दैट मेक्स अस मोर वैल्यूएबल इन द कंपनी. सोचिए आप हमारे कंपनी में ऋतुजा ना, नहीं आदिति, ते मास म्हणून ऐकू पण येत नाही काय बोलला ना, बट कीप इट ऑन. Aditi is my resource. She is my company. She knows only Python. I have 10 projects on Python, but माझे Python चे प्रोजेक्ट संपल्यानंतर काय करू अदितीचं? She is a cost to me now. Right, 2 minutes back she was a resource. Now she's a cost. Aditi also along with Python, new JavaScript, new HTML5. तो कल अगर Python का प्रोजेक्ट नहीं है, तो I can make offer for another task as well. तो अपने आर्मर में you want to be successful in this particular field, in your armor you should have more than one weapons. एक ही Python का वेपन लेकर गए, ब्रह्मास्त्र. Different problems require different weapons. So likewise, different kind of problems will require different solution in programming as well. So just learning Python will definitely not help you. But Python could be the first programming language also. It's a very good language to begin with. आप में से कितने लोग हैं those who have learned some other language earlier? No? ऑनलाइन में है जिन्होंने, ऐसे कोई है जिनके इसके पहले कोई लैंग्वेजेस हो चुके हैं? अथर्व हैज लर्न. एनीबॉडी एल्स? निखिलेश हैज लर्न. एनीबॉडी एल्स? यस. यस नहीं का आपका नाम बताइए. फैसल इमाम सर. फैसल हैज आल्सो लर्न सम लैंग्वेज. फैसल, व्हिच इज द लैंग्वेज दैट यू हैव लर्न? HTML सर, स्टिल लर्निंग स्टिल. HTML पढ़ा है इसने. ओके. HTML एक तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, सेकंड पॉपुलर मगर है. ओके, इट्स अ वेरी पॉपुलर स्किल, इट्स अ मस्ट रिक्वायर्ड, मस्ट नो स्किल. सबको HTML आना चाहिए. अब QA you will understand it later. सबको आना चाहिए. It's something like, वो तो ABCD है, मालूम ही होना चाहिए. कोई पूछेगा नहीं तुम्हें HTML आता है कि नहीं है. Assume आता है, assume. तो HTML को सबको पढ़ना है. And जिनको कोर्स नहीं करना है फिर भी पढ़ना है, connect to me. I'll give some very good resource. एक 15-20 घंटे आप उस पर टाइम स्पेंड करोगे तो एटलीस्ट बेसिक नॉलेज ऑफ HTML डेफिनेटली है. That's my word to you. I will also not teach you. I promise you that you will learn on your own. Okay. I have some very good literature for HTML to begin with. खुद होके ही करना है. And you can do it, you can manage it. इंजीनियरिंग तक यहाँ तक आया तो HTML खुद मैनेज कर सकते हो, बट कभी तो करना चाहिए. ऐसा नहीं कि हाँ करूंगा आगे जाके, जब प्रोजेक्ट का दिन होता है उसी दिन HTML चाहिए, तब सीखने का समय नहीं होता है. तो मेक श्योर दैट यू हैव सम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन. एवरीबॉडी, दोस आर ऑनलाइन, लिसन टू मी. HTML इज समथिंग दैट यू ऑल शुड नो, एवरीबॉडी शुड नो. बट कमिंग बैक टू Python, it was introduced long time back, 1990 में इंट्रोड्यूस हुआ, and then it's a high level general purpose programming language.
Atharo said it's an object-oriented language. Very true. It supports multiple programming paradigms. क्या क्या support करता है? I'll let you know. It's a high-level language. It's not like low-level language like assembly, जहाँ आपको है ना zeros and one में ऐसा कोई कोड लिखना होगा. अगर आपको प्रोग्रामिंग मालूम भी नहीं है ना, आज आप जब पाइथन पढ़ेंगे तो फर्स्ट डे व्हेन यू लर्न सम पाइथन कमांड्स, शो इट टू योर डैड एंड मॉम इफ दे आर नॉट फ्रॉम आईटी बैकग्राउंड, स्टिल दे कैन अंडरस्टैंड यहाँ क्या हो रहा है. इट्स दैट सिंपल. अगर कोई कहता है प्रिंट कर रहा हूँ मैं, तो अरे एनीबॉडी हु अंडरस्टैंड्स इंग्लिश विल अंडरस्टैंड. इनपुट ले रहा हूँ, इनपुट लिखा है तो यही अंडरस्टैंड ना, इनपुट का मतलब मालूम है तो इनपुट माने सम डेटा में बी कमिंग इनटू योर प्रोग्राम. इट्स दैट सिंपल. Okay, so it's a high-level language, makes use of English-like words, so it becomes very easy for anybody to learn, understand, use, write programs in this language. It's a general-purpose language. यानी ऐसा नहीं है जैसे C की बात करें तो only for system programming, machine level पे काम कर सकते हैं. अगर हम लोग अभी फैजल was talking about HTML, वो सिर्फ pages डिजाइन करने के लिए यूज किया जाएगा, ऐसा नहीं है पाइथन के बारे में. It's a general purpose. It can be used in embedded to some extent. It can be used for web development. It can be used for developing general applications as well. जो हम लोग जावा में वगैरह डेवलप करते हैं वैसे एप्लीकेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं. It's a general purpose language. It is not a language which is meant specifically for one task. आजकल लैंग्वेज R कहा जाता है for data science. तो उसका एप्लीकेशन और स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन जहाँ करने हैं वही उसी एक काम के लिए यूज किया जाएगा, वो स्पेसिफिक एप्लीकेशन है. पाइथन की बात ऐसी नहीं है. It's a general purpose language. It can be used for data science. It can be used for machine learning. It can be used for in AI. It can be used for simple एक calculator बनाना है वहाँ भी यूज कर सकते हैं. It can be used for creating a website, means a web application, वहाँ भी यूज कर सकते हैं. It's a general purpose language. It can be used for variety of tasks. ये कोई ऐसे specific task के लिए बनाया गया ऐसा language नहीं है. Language supports the language and many supporting tools are free, and Python programs can run on every operating system. So if you are working on some language, say Microsoft की कोई टेक्नोलॉजी लेते हैं, VC++ की बात करते हैं. अगर VC++ में कोई आप सॉफ्टवेयर डिजाइन करोगे या VB में कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन करोगे, वो विंडोज पे ही काम करेगा. It will not run on Linux, it will not run on Mac, वहाँ काम नहीं करेगा. पाइथन की ऐसी बात नहीं है. पाइथन अगर आपकी मशीन पे काम करता है and I want to ship that code to you, I don't even need to ask you कि आपके पास मशीन कौन सी है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, आपके पास कौन से कॉन्फ़िगरेशन की मशीन है. If it runs on my machine, it will run on any machine. When I use the word machine, machine does not just mean hardware. Machine means a combination of hardware and software. Hardware is the machine architecture and software is the operating system which is managing that. तो इसके आगे जब भी मैं मशीन कहूँगा, I am not talking about the hardware alone. मेरे लिए machine is the platform, and that platform is a combination of hardware and operating system. Hardware is the machine architecture. आपके पास i3 रहेगा, आपके पास i7 रहेगा, आपके पास माइक्रो कंप्यूटर रहेगा, आपके पास लैपटॉप रहेगा, आपके पास डेस्कटॉप रहेगा, अलग अलग टाइप के मशीन्स रहेंगे. आर्किटेक्चर कैन बी डिफरेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग रहेंगे. आपके पास मैक है तो इनके पास CentOS है, इनके पास विंडोज है, इनके पास लिनक्स है, सोलारिस है, कितने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं. You as a Python programmer do not have to worry about it. You write a code on one machine, it is bound to work on any other machine. That's one of the big reasons why Python is so very popular. Most of the languages, अगर आप C में भी कोई कोड लिखते हो, I cannot take the executable file of C or C++ and just give it to you without knowing what machine you have. It will not run on your machine, may not run on your machine. अगर आपने Linux के लिए कोड कंपाइल किया रहेगा और Windows में जाके रन करने की कोशिश करोगे, it will fail. That will not happen in Python. You run it on your machine, it is promised it will run on any other machine. How does it happen? How does this magic happen? C का प्रोग्राम किसी भी मशीन पे रन नहीं कर रहा है, Python कैसे रन कर रहा है? We need to understand this even before we start Python as a programming language. अगर हमें यही नहीं पता चला स्पेशलिटी क्या है Python की and how does it provide that particular speciality, कोई भी चीज स्पेशल प्रोवाइड करनी उसकी कोई कॉस्ट भी तो रहेगी ना. कॉस्ट नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, कॉस्ट इज इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस. कहीं तो कुछ तो ज्यादा रिसोर्स वो खाता रहेगा, कुछ तो इसकी कॉस्ट रहेगी. वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट एज वेल. I was talking about Microsoft technology. Microsoft languages are very good, technologies are very good, but then they will run only on a specific kind of platform. You cannot take it to any other machine. कभी आपने सुना है Linux में Microsoft में बनाया हुआ कोई एप्लीकेशन Linux में, Windows एप्लीकेशन Linux में रन कर रहा है? No, that doesn't really happen unless you have some kind of tool in between to make it run. Directly तो run नहीं होता है. That's not the case in Python. It will run. Second thing is अगर Python आपको पढ़ना है, entire documentation with examples, everything is freely available on python.org. I'll take you to that site as well. All the documentation, everything is available.
most of the content what I'll be discussing in the classroom are also extract from the same freely available documentation. You will find me in the course several times. Nikhilesh, Sir, दोन I screen can दिसतात का? see a header, a brief introduction, and a one image. I दोन cannot screen नाही, see. एकच screen दिसते ना? हो, दोन दिसतात का एक? एकच दिसतंय. Okay. So what I just saying? क्या कह रहा था? सुन रहे थे या नहीं सुन रहे थे? तो The performance as a cost. pardon? Every Performance as a cost. performance has a cost. तो Python का ऐसा क्या cost है जो हमें bear करना होगा? That is what we need to understand. Second thing that I was talking about, कोई language अगर आपको पढ़नी है, resources are available. I told you, even using the documentation which is freely available. You will find me in the presentation also. I will be copying the contents on the documentation itself. And for you to become familiar as to how to use the documentation, कोर्स के दौरान भी अगर मुझे कुछ चीज पता भी है और नहीं भी पता है, I'll search in front of you. और एक गूगल सर्च नहीं करते बैठेंगे हम लोग, since we have entire literature available at one place, वहां जाके कैसे सर्च करना है, वहां से वो हेल्प कैसे लेनी है, is what I'll teach you. So we need to learn how to learn Python. I'll tell you why. Python is not a static language. जैसे C में बहुत सारे चेंजेस नहीं होते हैं. Python में every 2-3 months new version is coming up. Okay. Last to last batch I started Python 3.6. अभी 3.9 आ गया है. ठीक है. तो with every new version new features will be coming up. तो अगर मैंने Python 3.6 कहा तो आप मार्केट में ये जाके कहोगे I am a Python 3.6 developer? No, I am a Python developer. तो कोई नया फीचर आया है तो वो कौन बताएगा आपको? जिन्होंने क्रिएट किया वही बताएंगे. ठीक, आपल्याला घरी येऊन सांगणार आम्ही हे नवीन फीचर ऍड केलंय? No, they'll be displaying that on the documentation side, on their portal, and we need to know how to learn it, how to use it, so that whatever changes happens in Python, we are abreast with the latest things which are there in Python. हमें मालूम होना चाहिए कि नए फीचर्स कैसे यूज करने हैं Python में जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं, and that is what we'll be doing when we learn Python. So that will be my attempt when I teach you Python. Okay, so I'll teach you how to, and this entire documentation is available at python.org. Okay, I'll take you to those sites. और एक चीज है, किसी ने कम से कम पेपर तो सामने रखा है, बाकी लोग हैं तो मोबाइल रख के बैठे हैं सामने. Okay, आज के दिन okay, I'll excuse, but if you really want to learn programming, you may understand whatever I say today over here, and take my word, ये स्टेज के नीचे जाओगे ना, half of the things you'll forget. It's not just about you, it's with most of the humans. Unless you are exceptional, आपको सब कुछ याद रहेगा. समझ में सब कुछ आ सकता है, याद सब कुछ नहीं रह सकता है. टेक माय वर्ड, समझ में शायद आप स्मार्ट हो तो समझ में आएगा सब कुछ. यू मे आस्क मी क्वेरीज, यू विल अंडरस्टैंड, यू विल रिमेंबर. क्वेश्चन पूछा तो और भी अच्छी तरह से याद रहेगा. ओके, बट देन सारी चीजें याद रहने वाली नहीं है. तो इफ यू रियली वांट टू लर्न एनीथिंग परफेक्टली, एनीथिंग, नॉट जस्ट प्रोग्रामिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मेक नोट्स इन योर ओन वर्ड्स. आज हमने बात क्या की? हाँ, पाइथन कहीं भी रन कर सकता है, एक वन लाइन सेंटेंस. इफ दोस नोट्स आर देयर विथ यू, आपने वो अपना नोट पढ़ते ही आपको वो सब कुछ याद आ जाएगा, whatever I had discussed in the classroom. This your notes act as a ladder to the memory, will act as a ladder to the memory where you will recollect what happened in the classroom. Where you will recollect what happened in the classroom. So it's very important that you take your own notes. It's very important that you take your own notes. So make sure that you take your own notes. अगली बार आते समय सबके पास एक फ्रेश नोटबुक चाहिए. एक नोटबुक हमारे लिए काफी नहीं होगी इस कोर्स में, पर कम से कम एक नोटबुक से शुरू करो. वो फिल होने पे दूसरा नोटबुक खरीद सकते हो. But then notes should be there. आज कितना भी ये ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल हो ना, आपका नोट आपका नोटबुक है. इट्स योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट व्हाट वाज डिस्कस्ड. क्या होता है, कोई कॉन्सेप्ट होता है, आई एक्सप्लेन ऑन द बोर्ड, एंड बाय लुकिंग एट दैट यू गेट सम इनसाइट. तब जाके समझ में आया ये एक्चुअली काम कैसे करता है. वो किसी नोट्स में, डॉक्यूमेंटेशन में कहीं नहीं मिलने वाला है. देयर इज वेयर द ट्रेनर कम्स इन.
मैंने तो कहा मेरा सोर्स क्या है, ये python.org से मैं पढ़ाने वाला हूँ, तो कोई भी जाके फिर खुद होके python.org से पढ़ सकता है ना। ओके, 2-4 ही पेजेस है, एक अराउंड 4000 ऑड पेजेस है, आप भी खत्म कर सकते हो 4000 ऑड पेजेस। होगा क्या? कहाँ से शुरू करे, कहाँ खत्म करे, यही समझ में नहीं आएगा। That is where the trainer comes in. I'll tell you what is to be learned, how it is to learn, how it is to be used. So whatever I teach, that should be there in your mood. Date डालना चाहिए, आज क्या हुआ, आज क्या डिस्कस किया, what is the insights. कई बार ऐसे कई सारे पॉइंट्स रहेंगे जो स्लाइड्स पे नहीं रहेंगे, and that I'll be talking about. Immediately note होना चाहिए, immediately note होना चाहिए. At least next time everybody should carry a notebook. It's a must. इसी तरीके से हम पढ़ सकते हैं. It's not just about programming. आप कुछ भी पढ़ते हो, कोई भी अटेंड करते हो सेशन, make sure that you always take your own notes. और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वर्ड टू वर्ड सब कुछ चाहिए, कीवर्ड्स तो आप कैप्चर कर सकते हैं ना, व्हाटएवर ऐसे शॉर्ट हैंड मालूम है तो सब कुछ लिखो, बट नहीं तो एटलीस्ट द कीवर्ड्स। ओके, तो मेक अ हैबिट, एंड जितना जल्दी हैबिट डेवलप करोगे नोट्स टेकिंग का, उतना आपको अच्छा रहेगा। बिकॉज हर दिन हम लोग नया कोई टॉपिक पढ़ते जाने वाले हैं, एंड इतना कुछ आगे जाओगे तो आपको एक तो ज्यादा टाइम भी नहीं होता है, ये इतने सारे कोर्सेज आपको करने यूनिवर्सिटी के भी। आर टाइम लाइक 1 सेमेस्टर वी हैव 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डन, आराम से चलता था। आपके एक ही सेमेस्टर में इतने सारी चीजें होती है, आजकल पैक्ट है, ये भी चाहिए, दुनिया भर की चीजें आत्ता शिकायचं, आयुष्यात पुढे काय करायचंच नाहीये। देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच हैव बीन क्रैम्प्ड इनटू अ सिलेबस, यू हार्डली गेट टाइम टू स्पेंड ऑन इट। और उस पर से आप नोट नहीं लोगे तो रिवीजन तो बहुत दूर की बात है, तो पूरा तो कोर्स रिवाइज नहीं होता है, आपके नोट्स आप रिवाइज कर सकते हो, तो मेक श्योर दैट यू टेक नोट्स। तो व्हाट इज पाइथन? नाउ अथर्व, लुक एट दिस, it is easy to learn, okay, that's why it is popular, and that's why most of people take up Python as a language, first language. I teach Python for students in a school also, we also run a school, तो हमारे स्कूल में I also teach Python right from 7th standard, I teach students Python, but उनको जब पढ़ाते समय सिखाने का तरीका अलग होता है। There we are teaching Python only to generate interest in programming. आपके लिए तो सीरियस लोग हैं, you are thinking at Python as one of the skill sets that will help you make a successful career, तो हमें तो सीरियसली पढ़ना है, तो अप्रोच अलग है। इट्स अ वेरी इजी लैंग्वेज टू लर्न, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जनरल पर्पस का मतलब है इट्स नॉट स्पेसिफिक लाइक लैंग्वेज डी, जैसे मैंने कहा सिर्फ स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन के लिए यूज किया जाएगा। एम्बेडेड सी बात की तो एम्बेडेड सी सिर्फ हार्डवेयर इंटरेक्शन के लिए यूज किया जाएगा। पाइथन ऐसा नहीं है, इट कैन बी फॉर वैरायटी ऑफ स्टफ, एंड आई गिव यू एग्जांपल फ्रॉम वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, तो सिंपल कैलकुलेटेड डेस्कटॉप एप्लीकेशन यू लाइक टू क्रिएट, हम सब कुछ कर सकते हैं पाइथन में, डेस्कटॉप टू वेब सब कुछ कर सकते हैं। But then, Atharva, make a note of this. It is a procedural, functional, object-oriented, everything. That means, if you come from the world of COBOL, जहाँ से मैं आया, that was procedural language. C, जो procedural language था. And if you are used to writing code in C style या COBOL style, that is style of means वो एक लिखने का, सोचने का तरीका है. I'll tell you the differences between them as we go ahead. In Python also, I'll start first with procedural way of writing programs. And then later I'll go ahead with object oriented way of writing the program, and then later we'll go ahead with functional way of writing the program. आज अगर फंक्शनल की बात करते हैं तो पहला दिमाग में आता है जावास्क्रिप्ट या फिर स्काला, ये लैंग्वेजेस दिमाग में आते हैं। तो पाइथन सब कुछ है। पाइथन पुराने स्टाइल से भी आपको कोड लिखने देगा, सी प्लस प्लस जावा के स्टाइल से, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल में भी कोड लिखने देगा, न्यू वे जावास्क्रिप्ट स्टाइल से अगर आपको कोड लिखना है, दैट इज आल्सो पॉसिबल। सो दैट इज समथिंग व्हिच इज स्पेशल अबाउट पाइथन। एक तो इजी है ये सब कुछ करना, इट्स नॉट दैट स्ट्रिक्ट, जावा या सी प्लस प्लस बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी है, कभी भी कुछ भी ऐड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, वी कैन डू दैट। सो इट्स इजी टू लर्न, इजी टू मॉडिफाई, इजी टू मेंटेन, प्लस लेस लाइंस ऑफ कोड लिखने पड़ते हैं आपको, वेरी वेरी कॉम्पैक्ट। इसका एक मोटो ही है, लेस लाइन मोर वर्क, यानी कम से कम लिखो लाइन इंस्ट्रक्शन, ज्यादा से ज्यादा काम करो, ऐसा पाइथन का एक कुछ तरीका है। बट पॉइंट इज इट कैन सपोर्ट ऑल स्टाइल ऑफ कोडिंग। दैट मीन्स ओल्ड स्टाइल से अगर आपको कोड लिखना है वो भी पॉसिबल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल से कोड लिखना है वो भी पॉसिबल है, फंक्शनल स्टाइल से कोड लिखना है, दैट्स आल्सो पॉसिबल। इट सपोर्ट्स मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैराडिग्म्स, यानी अलग अलग टेक्निक से जो प्रोग्रामिंग के है, पाइथन सपोर्ट्स ऑल ऑफ देम। एंड आई विल फोकस ऑन 2 टेक्निक्स इन द कोर्स। फोकस ज्यादा अपना 2 टेक्निक पे रहेगा, एक है प्रोसीजरल वे ऑफ राइटिंग द कोड एंड सेकंड इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे ऑफ राइटिंग द कोड, दैट इज व्हाट वी विल फोकस ऑन। दैट डजंट मीन आई विल नॉट टीच यू फंक्शनल वे ऑफ राइटिंग द कोड, वो भी देखेंगे हम लोग, और वो भी देखेंगे कि ये नया स्टाइल है, मतलब कैसे लिखते हैं कोड, उसके क्या एडवांटेजेस है, वी विल बी लुकिंग एट दिस। इट इज efficient high level data structures and simple but effective approach to object oriented programming. High level data structures, अब आप में से सेकेंड ईयर में डेटा स्ट्रक्चर कोर्स है आपके लिए, है किसी को? कॉम्प एंड साइंस में डेटा स्ट्रक्चर्स, if you come down for data structure course, it is one of the most interesting course that is there, where we learn different mechanisms of organizing data in the memory. We are starting this week, coming week itself, data structures.
where you learn different way of organizing data in the memory. Every serious developer, someday down in his life, has to learn data structure. You cannot do without that. You cannot do without that. तो आपको पढ़ना तो जरूरी है. पाइथन डेवलपर को मालूम होना जरूरी है, बिकॉज इन पाइथन में ये सारे जो हाई लेवल डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम के कोर्स में इंप्लीमेंट करना सीखेंगे, ऑल ऑफ देम स्टैंड ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड इन पाइथन. दे आर रेडीमेड. यानी जहां मैं C++ में या C में आई मे गो हेड राइटिंग 150 लाइन्स ऑफ कोड टू क्रिएट अ लिंक लिस्ट, या एक लाइन में लिस्ट आ गया लिस्ट. दैट्स हाउ इट इज. सो ऑल द डेटा स्ट्रक्चर्स आर different techniques of organizing data in the memory. Different techniques of organizing data in the memory. Because in आजकल मार्केट में डेटा बहुत होता है, डेटा को सही तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं करोगे. I'll take simplest example. In your home, in your rack where you must have kept your books, वहाँ अगर आपने बुक्स को कैटेगराइज करके नहीं रखा रहेगा, सारे बुक्स आगे स्टैक करके रख दिए, जो बुक चाहिए वो ढूंढने जाओगे, टाइम लगेगा. बट वहां अगर आपने कैटेगराइजेशन किया था, मोनिका मॅडम त्यांना आवाज बंद करायला सांगा थोडा वेळ. त्यांना सांगा लेक्चर चालू आहे, अर्धा तासाने चालू करा. काय करायचं इकडे शेजारी चालू आहे. दरवाजा बंद करा, दरवाजा नॉक करा, त्यांना सांगा. नाही ते दरवाजा बंद करून काय, अहो इकडून आवाज येतोय, असं काय करताय. त्यांना नॉक करा, त्यांचा लेक्चर चालू आहे. I was talking about data structures. So when you talk about data structures, everybody needs to know data structures because in real world there are too much of data that we need to organize in a way. Let's take a simple example. बैंक में कितने लोगों का कस्टमर का अकाउंट होते हैं? Millions of customers. तो अगर वो अकाउंट आप जाए पैसे विड्रॉ करने, and if it takes another 10 minutes for him to check balance सही है नहीं है, चलेगा क्या आपको? You'll get frustrated. आपको तो चाहिए क्लिक, वहाँ ATM में गए, कार्ड इंसर्ट नहीं किया तो बैलेंस दिखाई देना चाहिए आपको. तो this will not happen unless you have not organized the data in the memory correctly. I was taking an example of your rack. आपके घर में कबर्ड है, सारे बुक्स एक के ऊपर एक रख दिए हैं, and you are searching for Python book, it will take you time. But अगर आपने कैटेगराइजेशन किया था, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बुक्स अलग, मैथमेटिक्स के बुक्स अलग, अगली बार पाइथन का बुक चाहिए तो क्या पूरे कबर्ड में ढूंढते रहोगे? You'll go to that section, quickly pick it up. क्या उतने ही बुक्स है, सिर्फ ऑर्गेनाइज ढंग से किया. So just by changing the way you organize the data, you can effectively access the data. Data structures gives you various techniques to organize data effectively in the memory. अलग-अलग टेक्निक्स देता है और इन टेक्निक्स की वजह से we can quickly access the data from memory. पाइथन में ये सारे डेटा स्ट्रक्चर आर रेडीमेड. विदाउट टू मच वर्रिंग अबाउट इन्होंने कैसे ऑर्गेनाइज किए हैं, आई विल टेल यू अबाउट व्हाट दैट डेटा स्ट्रक्चर इज, और उसको डायरेक्टली यूज करना सीखेंगे. जहां सी के कोर्स में, C++ के कोर्स में डेटा स्ट्रक्चर कोर्स खत्म होने के बाद हम लोग टच करते हैं, पाइथन में कोर्स के बिगनिंग में डेटा स्ट्रक्चर टच करेंगे. दैट मीन्स फर्स्ट टॉपिक इटसेल्फ विल बी डेटा टाइप्स, जहां में इंटीजर फ्लोट्स वगैरह के बाद आई स्टार्ट विद लिंक लिस्ट एंड मैप्स एंड डिक्शनरीज एंड सेट एवरीथिंग, and we'll make use of it. यहाँ we say all the data structure are off the shelf. शेल से उठाइए और यूज कीजिएगा. आपको ये जानना है कौन सा डेटा स्ट्रक्चर कौन से कामों के लिए यूज करना है, रेडीमेड ऑलरेडी अवेलेबल रहेगा. चैलेंज फॉर पाइथन डेवलपर इज नॉट टू राइट द कोड फॉर डेटा स्ट्रक्चर. चैलेंज फॉर पाइथन डेवलपर इज टू सिलेक्ट द राइट डेटा स्ट्रक्चर. उसे सही काम के लिए सही चीज उठानी आनी चाहिए. और जिन्होंने डेटा स्ट्रक्चर का कोर्स किया है, दे विल ऑलरेडी नो इस डेटा स्ट्रक्चर का पर्पस क्या है. In this course also I'll let you know, अरे ये hierarchy arrangement है, ये linear है, linear से क्या फायदा होता है, hierarchy से क्या फायदा होता है, इसलिए ये यूज करो. I'll be telling you that. But then when you learn data structure, खुद implement करना सीखोगे तो और भी confidence बढ़ेगा. But वो Python में नहीं implement करेंगे हम लोग, either in C++ or C we implement, so we learn everything from scratch. Python का philosophy अलग है. Python कहता है कि बाबा अंदर क्या चल रहा है आप मत सोचो. आजकल के machines पावरफुल है, फास्ट रन करते हैं, तो स्पीड वगैरह की चिंता मत करो. आप ये रेडीमेड यूज करो और अपना काम खत्म करो. फोकस मोर ऑन योर टास्क. पाइथन की फिलोसफी है, आपका जो काम है उस पर फोकस करो. आपका काम बन गया ना, छोड़ दो ना, फिर बाकी क्यों सोच रहे हो इसने अंदर कैसे काम किया. दैट्स द फिलोसफी ऑफ पाइथन. दैट डजंट मीन वी शुड आल्सो हैव ओनली दैट फिलोसफी. अगर हमें सीरियस प्रोग्रामर बनना है तो हमको ये अंदर कैसे काम कर रहा है ये भी मालूम होना चाहिए. वी शुड बी हैविंग सम नॉलेज ऑफ दैट एज़ वेल. Python interpreter and extensive libraries are freely available in source or in form of binary form for all major platforms from Python website. यानी अगर python.org पे जाओगे तो Python की लाइब्रेरीज आपको लिनक्स के लिए, सोलारिस के लिए, विंडोज के लिए सबको मिलेगा.
यानी पाइथन फॉर विंडोज, लिनक्स, सोलारिस सब मिलेगा। एक बार आपने अपने मशीन पे इंस्टॉल किया, फिर किसी को कोई भी पाइथन प्रोग्राम देने दो आपको, इट विल रन ऑन योर मशीन। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज इंटरप्रेटर एक्सटेंसिव स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मतलब आपके जो कॉमन टास्क है वो कंप्लीट करने के लिए सिंपलेस्ट थिंग, व्हाट्स फैक्टोरियल ऑफ 197? क्या बात कर रहे हैं, किसको मालूम होगा क्या 197? 197 बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, I asked you what's factorial of 4, you could have told me. Yes, what's factorial of 4? हाँ, मारे लाता इथं काय सापडलं तर 24 है ना। फॅक्टोरियल म्हणजे काय है ना, 1 into 2 into 3 into 4, ओके फॅक्टोरियल। बट 197 का किसको याद रहेगा? शकुंतला देवीला पण आला असतं की माहित नाही 197, इट्स बिग नंबर ना। 197 किती होईल? 1 into 2 into 3 into 197 तक बहुत बड़ा हो जाएगा नंबर। एनीवे, बट अगर सी के प्रोग्रामर हो आप, उसका कोड आपको लिखना होगा टू फाइंड फैक्टोरियल। यू राइट अ लूप, यू कैलकुलेट इट, यू प्रिंट इट। पाइथन में फॉर ऑल सच ऑपरेशन रेडीमेड फंक्शंस अवेलेबल। मैथ में जाइए, कहिए फैक्टोरियल दे दो, वो फैक्टोरियल दे देगा। अगर आपको नेट से कनेक्ट करना है तो उसके लिए स्पेशल पैकेजेस, आपको अपने सिस्टम से कनेक्ट करना है उसके लिए स्पेशल मॉड्यूल्स। तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इतनी पावरफुल है, जो आपकी कॉमन रिक्वायरमेंट रहेगी ना, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करना है, नेट पे इंटरेक्ट करना है, मेल्स भेजने हैं, ये जो आपकी कॉमन रिक्वायरमेंट है, उसके लिए रेडीमेड प्रोग्राम्स अवेलेबल पाइथन। उसके लिए कोई कोड लिखने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट शुड बी अवेयर कि वो कौन सा मॉड्यूल है जिसके थ्रू मुझे ये काम कर सकता हूँ मैं। मुझे देखना था एक कोड मैं रन कर रहा हूँ, उसका टाइम मुझे चेक करना था, हाउ मच टाइम इट टेक्स टू रन द प्रोग्राम। ले लो मॉड्यूल कॉल्ड एज टाइम, और टाइम से बोलो क्लॉक द टाइम, पहला और स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम, वो क्लॉक करके दे देगा आपको। ये इतना आसान नहीं है बाकी लैंग्वेजेस में। यहाँ आपकी जो कॉमन रिक्वायरमेंट्स है उन्हें फुलफिल करने के लिए देयर आर रेडीमेड लाइब्रेरीज विच आर ऑलरेडी अवेलेबल, मॉड्यूल्स विच आर ऑलरेडी अवेलेबल। सो पाइथन प्रोग्रामिंग इज क्विक because most of the time you will not spend your time implementing the things on your own. You will actually pick up the ready-made module and get your work done. So it actually becomes quite fast. Python programmer ज़्यादा productive होता है। Productive क्यों? Because वो जल्दी से काम खत्म कर सकता है। जल्दी क्यों कर सकता है? Because ready-made Python में दिया गया है मॉड्यूल में। So there are hundreds of such modules which are available. कितने? हंड्रेड्स। यानी आपकी मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट है, रेडीमेड। ग्राफिकल कुछ करना है, रेडीमेड। इमेज प्रोसेसिंग करना है, रेडीमेड टूल अवेलेबल है। ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम करना है, रेडीमेड है। एम्बेडेड काम करना है, रेडीमेड मॉड्यूल्स अवेलेबल है। तो ऐसे हंड्रेड्स ऑफ टूल्स अवेलेबल है। स्टोरी डजंट एंड हियर। पाइथन की एक रिपोजिटरी है जहां python.org से, यानी क्रिएटर्स ऑफ पाइथन से रेडीमेड मॉड्यूल नहीं है, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी से। यानी इनकी एक कंपनी है, अदिति की एक कंपनी है। अदिति ने कोई एक सॉफ्टवेयर बनाया था, मॉड्यूल बनाया था, एंड दैट वाज सॉल्विंग अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम। क्रिप्टोग्राफी का एक प्रॉब्लम है, वो सॉल्व करती है। एंड शी हैड डन सम रिसर्च, शी हैड इंप्लीमेंटेड, इट वर्क्स फाइन, एंड देन इट इज वर्किंग सो फाइन दैट पीपल स्टार्ट यूजिंग इट, एंड देन इट इज अपलोडेड इन द रिपोजिटरी। तो दुनिया में और किसी को चाहिए, यू विल नॉट स्पेंड हिज टाइम राइटिंग द थिंग, डाउनलोड, स्टार्ट यूजिंग इट। एनी गेस व्हाट्स योर गुड नेम? साइली। साइली, एनी गेस रिपोजिटरी में ऐसे कितने सॉल्यूशंस रेडीमेड अवेलेबल रहेंगे? गेस गेसच करायचं, आपल्याला कुठं नंबर द्यायचा आहे, मार्क पडणार त्याच्यावर। एवढं 35 सॉल्यूशंस अवेलेबल रहेंगे। 35 बहुत कम नंबर हो गया ना। 1000 अवेलेबल रहेंगे। कितने 1000? ये आपने तेव्हा सांगितलं, हंड्रेड्स ऑफ। 1000 किती? 1000, 2000 किती? 1000. ओके, हाउ अबाउट यू, व्हाट डू यू फील? 2000, 5000, 10,000. अरे काय आता आकडे वाढायला लागले। 7,000 कमी आहे। Anybody wants to make a wild guess? 10,000. There are more than 2,38,000 ready-made solutions which are available. किती? More than, and I'm not joking. I'll be showing you that, and in some part of our course, we'll also be picking up some module because मुझे वो भी सिखाना है आपको। Because Python as a language में जो आ रहा है वो आपने सीख लिया। इसके मतलब है स्टैंडर्ड मॉड्यूल के अलावा कोई रिक्वायरमेंट रहेगी तो क्या आप खुद कोड लिखते बैठोगे? जहां रेडीमेड प्रूवन टेस्टेड कोड अगर अवेलेबल है, विल इट नॉट बी शेयर वेस्ट ऑफ टाइम कि जिसके लिए प्रूवन टेस्टेड कोड अवेलेबल आहे और वो कोड आप लिखते बैठे हो, यू रीइन्वेंट द व्हील आणि शब्बात चांगलं काम केलं। काय केलं? जे आधीच आहे ते परत केलं। नो पॉइंट इन रीइन्वेंटिंग द व्हील, करेक्ट? सो आई विल आल्सो बी टीचिंग यू हाउ टू डाउनलोड दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, हाउ टू यूज इट इन द पाइथन डायरेक्टली। सो रिपोजिटरी है, एंड यू कैन आल्सो चेक, इट्स मोर देन 2 लाख एंड काउंटिंग। ये हर बार बढ़ते जाता है, तो मैं नंबर देखिए भी फायदा नहीं है। आज एक नंबर दिखाऊंगा, कल जाके रिपोजिटरी में देखेंगे नंबर कुछ और होता है, बट इट्स डेफिनेटली मोर देन 2 lakhs, इट्स डेफिनेटली मोर देन 2 lakhs। मगर मालूम भी तो होना चाहिए ना कहाँ रेडीमेड सॉल्यूशंस अवेलेबल है। सॉल्यूशन अवेलेबल भी है, गूगल करके पता भी चला वहाँ सॉल्यूशन अवेलेबल है,
डाउनलोड कैसे करना है, चलो डाउनलोड भी कर लिया, अपने प्रोग्राम में कैसे यूज करना है, shouldn't we know that? That is precisely difference in the way we will be teaching Python. तो पाइथन ऐसे सिर्फ लैंग्वेज करके फायदा नहीं है, पाइथन को हम लोग यूज कैसे कर सकते हैं, ऑल दिस इकोसिस्टम है पाइथन का। पाइथन पॉपुलर क्यों है? बिकॉज ज्यादातर प्रोग्रामर को कोड लिखने की जरूरत नहीं है। कोड क्यों लिखने की जरूरत नहीं है? इतने सारे 2 लाख के ऊपर सॉल्यूशंस आर ऑलरेडी अवेलेबल। कल आपको डेटा के साथ एनालिसिस करना है तो आपका खुद का लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं है। देयर आर SciPy, NumPy, रेडीमेड मॉड्यूल्स आर ऑलरेडी अवेलेबल। डाउनलोड, इंटीग्रेट विद योर प्रोग्राम, स्टार्ट यूजिंग देम। दैट टाइम टेस्टेड प्रूवन टेक्निक्स। तो इसके लिए आपको कोड लिखने की जरूरत है नहीं, and we should learn how to do that, and that is precisely. So although there are hundreds of standard ones which are available, standard कौन? जो python.org से आएंगे। पाइथन आपने मशीन पे इंस्टॉल किया, 200-400 तो आपके पास आ जाएंगे मॉड्यूल, और यहाँ 2 लाख से ऊपर रेडीमेड मॉड्यूल्स अवेलेबल है, and they are all tested, they are all tested. Although they do not give you assurance कि ये काम करेगा, because फ्री में ले रहे आप, फ्री में ले रहे तो उसके साथ गारंटी नहीं आएगी। बट अगर इसका यूज पहली 1 लाख बार हो चुका है तो वही गारंटी है ना हमारे लिए। इन मिलियंस ऑफ सिस्टम इट इज ऑलरेडी वर्किंग करेक्टली। वो फेल तभी होगा अगर आप गलत तरीके से यूज करोगे। इफ यू यूज इट करेक्टली इट विल आल्सो वर्क करेक्टली, बिकॉज़ देयर आर मिलियंस ऑफ सिस्टम, प्रूवन है, पिछले 4 सालों से वो यूज किया जा रहा है दुनिया भर में। इफ इट इज वर्किंग करेक्टली इट आल्सो वर्क करेक्टली ऑन योर मशीन। दैट इज व्हाट वी नीड टू लर्न। सो पाइथन का इकोसिस्टम इज वेरी वास्ट। Those are online. If there are any questions, please ask. You do not have to wait for me to ask your question. Anybody amongst you also, किसी को कोई query हो, कुछ चीज समझ में नहीं आए हो, I have a bad habit, sometimes I speak very fast. अगर कुछ समझ में नहीं आया है, just raise your hand, ask there and there itself. My promise to you is 99% of the time, 1% I leave it because some students come with a weird question, but 99% of the time your questions will be answered there and there itself. That's a promise from my side. Okay, because I spent so much of time on this particular technology. फिर भी 1% छोड़ता हूँ because कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है जो सोचा ही नहीं था, but most of the questions are normal student, because आपके लिए पहली बार रहेगा, मेरे लिए ऐसे 1000 स्टूडेंट लाके गए हैं, तो I know that kind of question that last. प्रॉमिस है वही आंसर करेंगे। I don't have that particular attitude कि ना आप क्वेश्चन पूछो, लेक्चर के बाद पूछो और अगले स्टेज में डिस्कस करेंगे, किसी को याद नहीं रहता, आप भी भूल जाओगे, मैं भी भूल जाऊंगा। जो क्वेश्चन आया मन में, ask there itself, get it clarified। क्यों क्या होता है, क्वेश्चन को अगर हम लोग डिले करेंगे ना तो उससे 2-1.5 घंटे का लेक्चर है, पहले आधे घंटे में क्वेश्चन आया, क्वेरी था, समझ में नहीं आया कोई पॉइंट, और उसी पे बेस्ड आगे का डिस्कशन है, तो आगे का पूरा वेस्ट ही है ना डिस्कशन, आगे क्या डिस्कशन आएगा। तो इट्स योर ड्यूटी टू आस्क, गेट द डाउट्स क्लैरिफाइड। यू ऑल लुक सो वेरी स्मार्ट, आपके चेहरे पे देख के तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन। सर क्वेरी है, क्लैरिफाई करो, इट्स योर राइट, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप यहाँ पढ़ने आए हो, हैड यू न्यू द थिंग्स अर्लियर, आपको यहाँ आने की जरूरत ही नहीं थी, आप यहाँ आए हो बिकॉज मालूम नहीं है, करेक्ट, मालूम नहीं तो पूछना भी है, करेक्ट। आई एम मेकिंग माय बेस्ट अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन यू द सर्टेन थिंग्स, फिर भी कहीं स्टक अप हो जाए तो आस्क देयर एंड देयर इटसेल्फ, एंड माय प्रॉमिस इज आंसर विल बी गिवन देयर एंड देयर, एंड डू नॉट हेजिटेट। सर आप फ्लो में थे, सम गर्ल्स स्पेसिफिकली, सर आप पढ़ाने में तुम्ही इतकं मग्न होता ना, त्या डिस्टर्ब करायची इच्छा नाही। अरे डिस्टर्ब नाही, तुमच्यासाठी चाललंय हे, माझ्यासाठी खेळ नाही चाललेला। इट्स नॉट फॉर मी, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग फॉर यू। तो इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, देयर इज नो पर्पस ऑफ मी डिलीवरिंग द लेक्चर ना, अदरवाइज फिर वीडियोस है ना देखने के लिए, तो वीडियो से ही सीख लेते ना। व्हाट्स द पॉइंट इन हैविंग अ लाइव लेक्चर? And those also who are there online, make sure if you have query, ask there and there itself. So will help the camera कडे बघायची 1 वर्षभर. I'm missing today some bit of camera as well. Anyway, so there are so many versions of Python which are there. The 2 most popular versions are available is Python 2 and Python 3. Python 2 and 3 अभी ये presentation मैंने 2-4 महीने पहले बनाया था, तो here I said the latest version is 3.8, but अभी भी मैंने mention किया latest is 3.9। ये अभी हर बैच के साथ, लास्ट बैच आई स्टार्टेड दैट वाज 2 मंथ्स बैक, बाद 3.8 था, अभी नया बैच है 3.9 है, तो आई हैव टू अपडेट माय प्रेजेंटेशन एज वेल। तो पाइथन इज अ वेरी डायनामिक लैंग्वेज, इट इज इवॉल्विंग वेरी वेरी फास्ट, एंड सिंस पाइथन 3.0 ऑनवर्ड्स इट हैज बीन स्टार्टेड इवॉल्विंग वेरी वेरी फास्ट। तो कोई पूछता है आपको आप क्या पढ़ रहे हो, तो टेल देम वी आर लर्निंग पाइथन 3। अब आप ये क्यों कह रहे हैं पाइथन 3? पाइथन क्यों नहीं? बिकॉज देयर इज अ प्रॉब्लम हियर। पाइथन 3 के पहले का सिंटैक्स is different than Python 3 के बाद का sentence. Okay, there is a problem. So even when you mention your resume, you will have to very clearly say Python 3, yeah? Because Python 2 का syntax अलग है और Python 3 का syntax अलग है। Python 2 का एक प्रॉब्लम बताता हूँ। Means 2 doesn't mean only 2. 2 means 2.0, 2.1, 2.3, 2.4 करते हुए 2.9 तक। वो 2 के फैमिली में Python 2.7 had become very popular. 2.7 had become very very popular. आज भी आपको
प्रॉब्लली ऐसी भी है कि आप किसी कंपनी में जाओगे, किसका एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर रहेगा पाइथन में, वो प्रॉब्लली 2.7 में भी हो सकता है, और तो वहां आपको 2.7 का सिंटैक्स यूज करना होगा, 3 का नहीं। आई टेल यू व्हाट डिफरेंसेस आर देयर इन द कोर्स एज वी गो हेड, बट अपने कोर्स में हम लोग कौन सा यूज करेंगे, 3.0। अब ऐसा क्यों, व्हाई नॉट 2 भी क्यों ना करें हम लोग, बिकॉज अभी एक प्रॉमिस किया है पाइथन के डेवलपर्स ने। अर्ली वर्जन में क्या होता था, हर नए वर्जन में नया फीचर आता था, पुराने के लिए सपोर्ट रहेगा नहीं रहेगा मालूम नहीं होता था। पाइथन 3 के बाद उन्होंने स्टैंडर्डाइज किया है कि पाइथन 3 के बाद जो भी फीचर इंट्रोड्यूस किया जाएगा वो लाइफ लॉन्ग पाइथन में रहेगा। ठीक है, वो सिंटैक्स स्टाइल ऑफ राइटिंग द कोड, रूल्स कोई चेंज नहीं होंगे, नए फीचर आते जाएंगे बट सिंटैक्स में कोई चेंज होगा नहीं। पाइथन 2 पॉइंट पहले वैसा नहीं था, वो स्टैंडर्डाइज नहीं था ज्यादा, बट 3 पॉइंट के आगे देयर इज अ कंटिन्यूटी इन द वे वी राइट पाइथन प्रोग्राम। एंड आज जो भी नया सॉफ्टवेयर बनेगा मार्केट में वो 3 में ही रहेगा, जो भी नया सॉफ्टवेयर रहेगा 3 में रहेगा। सो फ्यूचर इज फॉर पाइथन 3, सो आई विल बी टीचिंग पाइथन 3। सो डोंट वरी अबाउट द वर्जन इन 3 में कौन सा वर्जन है, उसमें कोई चिंता नहीं है। 3.6 भी लेता हूँ तो कोई भी चिंता नहीं है, 3.8 3.9 एक आध दो नए फीचर आते रहते हैं। हम लोग सारे नए फीचर भी तो थोड़ी ना डिस्कस करते हैं, आवर पर्पस टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज, करेक्ट। बट हम सिंटैक्स कौन सा यूज करने वाले हैं, पाइथन 2.7 का नहीं यूज करेंगे, पाइथन 3 का यूज करेंगे, 3.0। तो कोई पूछता है आपको पाइथन तो कहिए पाइथन 3, वर्जन मत बताइए, जो भी लेटेस्ट वर्जन में काम करूंगी पाइथन 3.4 5 6 7 8 9 10 जो भी रहेगा, वेलवर 10 भी आ चुका है पाइथन का, बट वो स्टेबल रिलीज नहीं है। पाइथन 3.9 इज अ स्टेबल रिलीज एंड आई एम चेकिंग, अभी 4 में करेंगे या 3.11 कहेंगे, देखना पड़ेगा अभी तो नंबरिंग कैसे करते हैं। ये जो पाइथन 2 वाला वर्जन था उसके लिए बराबर एक साल पहले जनवरी 1 2020 में सपोर्ट हैज बीन डिसकंटिन्यू, यानी पाइथन कम्युनिटी भी उसके लिए सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करती है अभी। वो जो पुराने कोड थे आप अपने अपने खुद मेंटेन करो, द क्रिएटर्स ऑफ पाइथन विल नो लॉन्गर प्रोवाइड अ सपोर्ट फॉर इट, इट हैज बीन डिसकंटिन्यू। तो आपके पास तो चॉइस ही नहीं है, न्यू जनरेशन प्रोग्राम्स विल हैव टू गो इन विद पाइथन 3.0, बिकॉज़ पुराने के लिए सपोर्ट ही अवेलेबल नहीं है। फिर भी पुराने का सिंटैक्स बीच बीच में थोड़ा बहुत देखना है हमें। क्यों देखना है, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन में जब हम जाएंगे एग्जिस्टिंग जो मॉड्यूल्स रहेंगे वो पाइथन 3 में रहेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, दे मे बी इन ओल्डर वर्जन एज वेल। तो वी शुड नॉट गेट अ शॉक ऑफ अ लाइफ टाइम, वी शुड अंडरस्टैंड हाँ ये पाइथन 3 में आसे केलं होतं, ओके पाइथन 2.0 में थोड़ा सा सिंटैक्स अलग रहेगा बट पर्पस तो वही रहेगा, रूल्स थोड़े बहुत यहाँ वहाँ चेंज रहेंगे। Now, there is an agency called as TIOBE. They always create an index. एक इंडेक्स देते हैं बेस्ड ऑन पॉपुलरिटी ऑफ द लैंग्वेज फ्रॉम द प्रोग्रामर्स पर्सपेक्टिव, कौन सा लैंग्वेज कितना पॉपुलर है मार्केट में, विच मे बी द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, गेस करो, गेस ही तो करना है, चलो आप बताओ। C++ में भी नहीं, एक सांगितलं मोस्ट पॉपुलर, क्यों दोन, जावा एंड C++, हाउ अबाउट यू, पाइथन, ओके गर्ल्स लाउडर, कोण बोलले, ओके कळतच नाही, असं असं लेट इट दे, मला फक्त कळलं नाही म्हणजे दुसरं काय नाही। पाइथन इज द मोस्ट पॉपुलर देयर, जावा एंड पाइथन आर मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज, एनीबडी एल्स ऑनलाइन में जो है C and Python, C and Python, okay, now look at this, we have been talking about learning new technologies and learning new things every now and then। अगर पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड आप देखोगे ना, लास्ट 20 इयर्स, आज एक दिन की बात नहीं कर रहा, लास्ट 20 इयर्स, पहला रैंक हैज ऑलवेज बीन आइदर सी और जावा। लास्ट 20 इयर्स विदाउट एक्सेप्शन, कोई दूसरा लैंग्वेज पहले रैंक के लिए नहीं है। फर्स्ट 2 रैंक्स पे 2 बैठे हुए, दोनों में ही कॉम्पिटिशन है, सी एंड जावा, एंड द थर्ड मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज हैज बीन C++ फॉर लास्ट 20 इयर्स, ओके। बट देन पिछले सालों से आज हाँ, पिछले 2 सालों से स्टोरी कुछ अलग हो रही है। पिछले 2 सालों से द स्टोरी हैज चेंजिंग वेरी वेरी फास्ट। पाइथन हैज शोन द हाईएस्ट ग्रोथ इन पॉपुलैरिटी, हाईएस्ट ग्रोथ इन पॉपुलैरिटी। ये अभी भी सी के नजदीक नहीं है, बट इन टर्म्स ऑफ क्या कहेंगे ना परसेंटेज, इट हैज शोन द हाईएस्ट ग्रोथ। तो इफ यू लुक एट द इंडेक्स, अगर देखे जाए तो पाइथन डिस्प्लेस्ड C++ एज द third most popular language in 2019, and in 2020 it has become the second most popular language in the world, second most popular language in the world in terms of usage, ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं। तो अगर आप लोएस्ट पोजीशन देखिए 2001 से, तो उसका 13th पोजीशन था लोएस्ट है। For these 3 years 2007 2018 and 2010 it has been ranked as the language of the year। language of the year किसे कहते हैं, जिसका
परसेंटेज ग्रोथ सबसे ज्यादा होता है। इसका ये मतलब नहीं सबसे पॉपुलर है, बट परसेंटेज ग्रोथ जिसका सबसे ज्यादा होता है, यानी ज्यादा से ज्यादा नए डेवलपर्स उसे यूज करना शुरू किए, तो लगातार 3 बार पिछले डेकेड में 2007, 2010 एंड 2018 Python has gained a big momentum. With this new field becoming popular, data science, ML, AI, Python has got that boost. Python has got that boost. तो अगर आप जरा एक चैट की तरफ नजर डालोगे तो 2020 की बात करें, C was very popular. आज अभी Python has become the second most popular language, but 2021 स्टोरी अलग है, ये 2020 तक की बात है। तो अगर पहले उसके पहले देखा जाए 2015 तक या 2010 में या 2005 में या 2000 तक देखा जाए, तो कंपटीशन बिटवीन C++ एंड पाइथन, C++ एंड जावा ही था। The only other language which has given it a competition is Python, and today Python has now 2021 में it has become the second most popular language. Okay, but then doesn't mean the other languages are dead. Huh? Other languages are still there. Other languages still there. For the first time since the TIB index nearly 20 years ago, C and C++ don't make it to the top 2 position anymore. Still C number 1, and Python claims the second position now. So Python has now become the second language, displacing Java from the second position. Okay, and that is something which is a surprise. Okay, even today it may have displaced Java from the second position because lot many people like you आप यहाँ आए हो यही है कि अब नए और 10-15 लोग बन गए, ऑनलाइन भी है 10-1 लोग है, नए 20 प्रोग्राम आ गए, अब 2-3 दिन के बाद आप भी गूगल सर्च करना शुरू करोगे तो उसकी पॉपुलरिटी और भी बढ़ती जाएगी। दैट्स द वे इट इज। दैट डजंट मीन कि एंटरप्राइज लेवल में सारे सॉफ्टवेयर पाइथन में बन रहे हैं, ऐसा नहीं है। आज भी एंटरप्राइज लेवल में द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज इज जावा, बट इमर्जिंग लैंग्वेजेस में जिसका पॉपुलरिटी बढ़ते जा रहा है वो पाइथन है। बट जो कहते हैं लोग CRA, आई हैव हर्ड मेनी कॉलेज प्रोफेसर्स टेलिंग C++ डेड लैंग्वेज है, आउटडेटेड है, उसको सीखने का कोई फायदा नहीं है। और आज भी C फर्स्ट पोजीशन पे है, आज भी C++ फोर्थ पोजीशन पे है। तो कौन कहता है, कौन कैसे कह सकता है कि दीज आर डेड लैंग्वेजेस, उसमें कोई स्कोप नहीं है, आपको सिर्फ नए लैंग्वेज पढ़ने होंगे। न्यू डजंट मीन, एंड पाइथन कहाँ का न्यू है? पाइथन भी तो 20 साल पुराना है, 1990 मींस मोर देन 20 इयर्स ओल्ड है, 30 साल पुराना है। तो इट डजंट मीन न्यू इज ऑल। हाँ, नए लैंग्वेज में एक नया लैंग्वेज है दैट वी शुड ऑल बी प्राउड अबाउट। जूलिया सुना है? नहीं, नॉट माय फ्रेंड्स नेम, नाइदर माय गर्लफ्रेंड्स नेम। इट्स द ओनली लैंग्वेज डिजाइन बाय इंडियन पर्सन है, यानी एक ही लैंग्वेज जो इंडियन बंदे ने बनाया है जो पॉपुलर होते जा रहा है। जस्ट चेक इट आउट। ओके, बाकी सारे लैंग्वेज तो इसने बनाए उसने बनाए, वी आर लर्निंग इट। कौन है? नाही, अरे इनको यहाँ रखा है, काहीतरी महत्व असेल ना, आणि त्यांचं वेगळं महत्व आहे, ह्यांचंही काहीतरी महत्व असेल ना। हाँ, लुक एट देम। अगली बार आते समय गेस करके मुझे ढूंढ के लाइए, बताइए ये कौन है दोनों बंदे। ओके, विदाउट दीज टू गाइस वी वुडंट हैव बीन हियर। आज अपना ये जो चल रहा है ना प्रोग्रामिंग का, ये इन दोनों के बगैर नहीं होता था। ऑनलाइन पे जो है, कैन यू सी दैट? नो। ओके, देयर आर 2 फोटोज दैट आर हैंग्ड ऑन द वॉल। So I just asking online चे स्टूडेंट दिसणार नाही ना, I just asking them who these 2 great guys are. Okay, one of them is still alive, वो अभी जिंदा है। Okay, tremendous contribution to the field of, okay, और कुछ ज्यादा बताएं इनके बारे में। प्रोग्राम which is the biggest prize that has been given in the field of science? नोबेल दिया जाता है ना, नोबेल प्योर साइंस में होता है, कंप्यूटर साइंस में किसी को नोबेल नहीं दिया जाता है। ओके, वहां क्या देता है, देते हैं नोबेल ऑफ कंप्यूटर साइंस में क्या होता है? एनीबडी ऑनलाइन? व्हाट इज द हाईएस्ट अवार्ड दैट एनीबडी कैन गेट इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटिंग? ओके, नोबेल ऑफ कंप्यूटर साइंस इज एलन ट्यूरिंग अवार्ड। ओके, ढूंढो ये कौन है एलन ट्यूरिंग, और वो नोबेल है कंप्यूटर साइंस का। ये दोनों बंदों को मिला है, बोलता है। और उसकी भी स्टोरी ऐसी है, द प्लेस वेयर इज टू वर्क, वहां के करीब करीब 8 लोगों को, उसी के ऑफिस के 8 लोगों को मिला है। दैट मीन्स ये सारे लोग एक्स्ट्रा टेरिटरी इंडिया म्हणजे धर्तीवरचे नाहीये, वरून कुठून तर टपकले। एकाच कंपनीतल्या 8 लोकांना नोबेल मिळण्यासारखं हे काहीतरी भयानक करतात हे लोक। ओके, सो 8 people from his organizations have got the same award, Alan Turing Award. So they must be something special. Okay, and it's like people keep on thinking, ऐसा कैसे हुआ एक ही समय एक ही कंपनी में एक ही रिसर्च में ऐसे ब्रिलियंट लोग एक साथ कैसे आ गए एक समय? ओके, बट ऐसा हुआ है। तो फाइंड आउट हू दोज आर, फोटो कॅप्चर करून जा डोळ्यात आणि शोधू ना तो कोण आहे दोघे। ओके, वी लॉस्ट हिम लास्ट ईयर, ट्रेमेंडस गाय, very humble,
one fine day, after I learned programming, I thought I owe to them. ह्यांच्यामुळेच मला कळालं असं वाटलं. So I wrote a mail just for appreciation. किंवा तुमच्यामुळं आज आम्ही जे आहे ते तुमच्यामुळं असं काही एक मेल लिहिलं. And surprisingly he responded. I was like shocked. ते अजूनही जपून ठेवलंय मी. अरे अशी लोक कुठे रिस्पॉन्ड करतात का? आपल्याला वाटतं काय कुणी पण appreciationचा मेल लिहितो. And I just wrote a thank note kind of thing. की अरे because of you, the world today what it is. एक छोटासा मेल लिहिला होता. He responded saying thank you kind of thing. And he said like it encourages us also to do something new. I was so like माझ्यासाठी सगळ्यात मोठं कुणाचं communication झाला असेल तर this guy. Okay. He is available in Pune also. He comes down to Pune as well. And let's go ahead. What makes Python very popular? I'll start off with features next time. Okay, अगली बार के लिए छोड़ देते हैं. अभी थोड़ा सा introduction ले लिया. Next topic is about features of Python. कि Python पढ़ना क्यों जरूरी है. Let me instead of that show you something else. In this particular course, while you learn, it will not just be about what I teach, what examples that I give, and so on. How is our learning going to be there? एक तो आपके notes रहेंगे, आप notes लोगे. In everyday session, अभी online में there are few of my students who have already learned some programming from me. आप सब लोग पहली बार ही आए हैं यहाँ. अपना मॉडल क्या है? How do I teach? जैसे अभी presentation था, तो कोई भी नया टॉपिक होगा तो I'll first tell you about that particular topic. कोई भी टॉपिक रहेगा. So tomorrow I start with decorators. घरातलं डेकोरेशन नाही आपलं. Python मध्ये. I'll explain you what is decorator. उसका पर्पस क्या है? पहले एक presentation देगा. After the presentation, I'll give a demonstration. उसके लिए कोड लिख के टेस्ट करके लाइन बाय लाइन स्कैन करके समझाऊंगा. एग्जांपल, रेडीमेड एग्जांपल्स है मेरे पास. And believe me, we'll take up around 400 examples in this course. तो एग्जांपल ओपन करूंगा, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा, एग्जांपल लेके समझाऊंगा. Third stage will be, I have explained it. I have explained the purpose of that particular concept. I give you a demonstration. कैसे यूज करना दिखाया. आपको भी तो यूज करके देखना चाहिए. वो सारा एग्जांपल थोड़ी ना याद रहेगा. या कोर्स में जब क्लासरूम में पूरा एग्जांपल थोड़ी ना लिख के होगा. So I'll be sharing that example with you. How do I share? Let me just show you. Niklesh, is the browser visible? Yes, sir. Okay. So we have a learning portal actually. We have a learning portal. Once you take an admission, you will have an access to this learning portal. इस learning portal पे आओगे तो यहाँ आपको login रहेगा and you will log in by your own username and password. यहाँ से आपको login करना है. Once you log in to this particular course, ये login कर लिए. आपने जिस course के लिए enroll किया रहेगा, you will get to see that course. Currently I'm taking all these batches, तो ये सारे दिखाई दे रहे हैं. But आपको अपने Python join किया रहता तो आपको Python दिखाई देगा सिर्फ. तो when you click on Python, यहाँ देखो. When you click on Python, I'll increase the font size just to make it easy to read. When you click on Python, क्या क्या दिखाई देगा? Topics discussed in the classroom. अपना पहला टॉपिक चल रहा है हिस्ट्री एंड फीचर्स ऑफ पाइथन, तो ये टॉपिक रहेगा. तो इट्स नॉट लाइक, इसलिए मैं कह रहा हूँ सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. जो मैं प्रेजेंटेशन में रहेगा उतना ही पॉइंट, जो मैंने कुछ एडिशनली बातें उसके समझा रहा हूँ वो नोट कर लीजिएगा. एडिशनल नोट्स तो आपको यहाँ मिलेंगे. अगर आपने इस पे क्लिक किया तो डाउनलोड दैट पर्टिकुलर नोट फॉर यू. ये ओपन हो जाएगा एंड यू कैन हैव, एंड पासवर्ड पूछेगा. इसके आगे याद रखो किसी भी नोट के लिए एक ही पासवर्ड इम्पिटस, सिर्फ वो आई कैपिटल या स्मॉल हो सकता है बस. So let me try out impetus over here right now. It says wrong I capital A N A. अरे क्या बात है. Caps lock on है, off है. Caps lock on है क्या off है, चेक कर लो पहले. Off है. So I type in IMPETUS. Impetus, हाँ. तो इसमें नोट मिलेगा हिस्ट्री ऑफ पाइथन क्या है, आज जो आगे डिस्कस करने वाले पाइथन की वर्जन कौन से है, कहाँ क्या है, 2.3 जो अभी डिस्कस कर रहा था मैं, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ये इसके कल का टॉपिक फीचर्स ऑफ पाइथन क्या है, आज हमने ये बात की थी, लास्ट स्टैंडर्ड लाइब्रेरी एंड अदर थिंग्स, ये सारे नोट्स में आपको मिल जाएगा. ओके, ये नोट्स है, तो ये हर एक टॉपिक का नोट रहेगा. इन एडिशन टू दैट नोट, यहाँ देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड के देखो, ये तो टॉपिक डिस्कस इन द क्लासरूम. अभी मैं डेमोन्स्ट्रेशन लूंगा, वो पूरी डेमोन्स्ट्रेशन की पूरी स्टोरी रहेगी यहाँ. तो व्हाट एवर डेमोन्स्ट्रेशन दैट आई टेक, द एंटायर स्क्रिप्ट विल बी अवेलेबल हियर. तो यहाँ जाना है आपको, वो स्क्रिप्ट डाउनलोड करना है. आज जो एग्जांपल लिए मैंने वो पूरा यहाँ रहेगा, आपको सिर्फ डाउनलोड करके लेना है. यू हैव टू डाउनलोड दैट एंटायर स्क्रिप्ट. ओके, उसके अलावा क्या है यहाँ. ओके, व्हाट एवर प्रोग्राम्स दैट आई डिस्कस इन द क्लासरूम, वो एडिशनल प्रोग्राम्स भी रहेंगे. ओके, चलो स्ट्रिंग का टॉपिक है, कोई एग्जाम्पल्स लिए मैंने, तो सारे बंडल करके एक ही जिप फाइल में डाले रहेंगे. तो अगर मैं स्ट्रिंग पे क्लिक करता हूँ
I'll just show you. If you click on the screen, नेट का क्या इशू है? Here it will ask you download. तो समझो हमने stream.zip डाउनलोड कर लिया, ये हो गया डाउनलोड। इसे आप ओपन करके देखिएगा, जितने भी एग्जांपल्स क्लासरूम में लिए रहेंगे वो सारे यहाँ मिल जाएंगे आपको। ओपन करोगे तो आगे 4 एग्जांपल लिए तो चारों एग्जांपल है। फिर आपको क्या करना है, एग्जांपल को ओपन करना है और उसे जैसे मैंने समझाया वैसे रन करके देखना है। आ गया ये पूरा एग्जांपल। ओके, सो द एग्जांपल विल आल्सो बी अवेलेबल फॉर यू। निखिल दिसतंय ना मी काय दाखवतोय? Sir, programming discussed in classroom, strings list. अच्छा ते दिसतंय का? Oh, Actually, screen is freezed. Screen is freeze. Okay. Now, Yeah, now it is visible. okay. So whatever I had downloaded the string, whatever I had, who was that? Who answered right now? Yeah, Shivani here. Shivani. Okay, Shivani. So this is what is there. Huh? तो ये जो कोड रहेगा हम लोग डाउनलोड करेंगे, so that code will also be available. So you need to again test that code, run that code line by line. I'll teach you how to run that code and so on. So that's another feature that is there. So here we go. Okay. Okay. So आपको डाउनलोड करना है, then you can start using it. So that was second part. First था notes, second था session का log, third थे programs. For all the topics, देखो ये सारे programs already है, and there are several topics, बहुत सारे programs है. Let me not waste time हो गया. यहाँ देखिए next एक important part है assignments. जो भी टॉपिक कवर करेंगे उसके असाइनमेंट्स रहेंगे। आप सीक्वेंस पहला टॉपिक उसके असाइनमेंट्स, इसके असाइनमेंट्स, और जब भी आप सबमिट करते हो तो मुझे यहाँ नोटिफिकेशन आ जाता है कितने लोगों ने सबमिट किया है एंड वॉट एवर इट इज। सो आई विल क्लिक ऑन हियर, आई हैव 18 लोगों ने लास्ट बैच में सबमिट किया है, लास्ट बैच में। ओके, तो यू विल इमीडिएटली गेट टू सी योर ग्रेड्स एज वेल, जो भी ग्रेड्स रहेंगे एंड सो ऑन। तो असाइनमेंट से तो टॉपिक पहला, आई गिव योर प्रेजेंटेशन, आई गिव योर डेमोन्स्ट्रेशन, आई शेयर द प्रोग्राम्स विथ यू। आपको प्रोग्राम्स रन करके देखना है और फिर असाइनमेंट की कोशिश करनी है, बिकॉज अनलेस यू, नोबडी हैज एवर लर्न प्रोग्रामिंग विदाउट राइटिंग प्रोग्राम्स। आप बिल्कुल रेगुलर रहोगे, सिंसियर रहोगे, प्रोग्राम नहीं लिखोगे, प्रोग्रामिंग समझ में नहीं आने वाला। यू विल नेवर गेट द कॉन्फिडेंस। प्रोग्राम इज नॉट अबाउट बाय हार्टिंग, इट्स अबाउट एक्सपेरिमेंटिंग, इट्स अबाउट प्लेइंग विद इट। तो यू नीड टू प्ले अराउंड विद इट, ये एक है। उसके बाद एडिशनल रीडिंग है, यानी ऐसे कई टॉपिक्स रहेंगे जो मैं क्लासरूम में डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, अपना एक लिमिटेड स्कोप है, बट आई वांट यू टू नो मोर, पाइथन के बारे में कुछ ज्यादा जानना चाहिए, तो यहाँ एक एडिशनल रीडिंग है। वह पहला टॉपिक, बेनिफिट्स ऑफ नोट्स, नोट्स क्यों लेना है बाबा, ओके, बेसिक थिंग्स। देन हर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को मालूम होना चाहिए कैरेक्टर सेट्स क्या होता है, यूनिकोड क्या होता है, उसका एक नोट है। वैसे पाइथन कैसे इंस्टॉल करना है, जो मैं कह रहा था ना, मोर देन 2 लाख लाइब्रेरीज अवेलेबल, वो कैसे वहाँ से कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, अबाउट इंस्टॉलिंग पाइथन पैकेजेस, ये सारे ऐसे एडिशनल रीडिंग है। फिर असेसमेंट है। असेसमेंट मीन्स ये आप ही को करना है। At Impetus we never force anybody. मैंने पूछूंगा अदिति आपने एग्जाम दिया क्या? अरे अदिति is grown up. Aditi has come by choice over here. Has anybody forced you to come over here? No. You have taken a conscious decision कि मुझे पाइथन आना चाहिए। तो आप ही को कॉन्शियस एफर्ट्स भी लेने हैं। तो ये सारा प्लेटफॉर्म आपके लिए अवेलेबल है। मैं हूँ, ये है, यहाँ जाना है, टेस्ट टॉपिक खत्म होने के बाद ही देना, उसके पहले नहीं देना। एंड वहाँ फिर आपका स्कोर देखना है, ये कहीं ना आपको यूनिवर्सिटी को दिखाना है या कहीं सबमिट करना है। दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड आपको कितना समझ में आया। कोई क्वेश्चंस यहाँ रहेंगे, जैसे कोई टेस्ट मैंने स्टार्ट किया, अभी इसका टाइम खत्म हो चुका है, लास्ट बैच के लिए था, पढ़े ये। तो अगर मैं 22 लोगों ने टेस्ट दिया है, तो ये टेस्ट शुरू कर सकता था। यहाँ रिपोर्ट आएंगे मुझे, अभी तो मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, आप शुरू करोगे तो आपको क्वेश्चंस आएंगे, मेरे लिए यहाँ रिपोर्ट आएगा कि बाबा आई विल अंडरस्टैंड कि ये टेस्ट इसने दिया था और इसने फिनिश किया है टेस्ट, ये इसको कितने मिनट्स लगे टेस्ट खत्म करने के लिए, इसका स्कोर क्या आया है, आई कैन सी ऑल ऑफ दैट, आई कैन सी ऑल ऑफ दैट। तो ये सारे बंदे हैं जिन्होंने टेस्ट दिया है, समझो दिया, आई कैन सी द एवरेज स्कोर। मेरे लिए एक एडवांटेज क्या होता है, आप टेस्ट दोगे तो यहाँ देखूंगा मैं, तो पता चलेगा अरे ये क्वेश्चन ज्यादा तो लोगों का गलत जा रहा है, ओके, इसका मतलब है ये पॉइंट शायद समझ में नहीं आया रहेगा, तो आई कैन क्विकली टच अपॉन दैट पॉइंट। तो इट्स अ फीडबैक फॉर मी। आपने टेस्ट दिया, आपका एनालिसिस देखा मैंने, तो मुझे पता चल सकता है कि भाई टॉपिक कौन सा बच्चों को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। आपको भी पता चलेगा ना, आपका आंसर गलत जा रहा है तो क्या है, यहाँ सही सोल्यूशन भी आपको मिलेगा। व्हेन यू सबमिट द टेस्ट यू विल गेट टू सी द करेक्ट आंसर एज वेल, बट टेस्ट तो दो ना, तब करेक्ट आंसर पता चलेगा आपको। तो ये है रिगार्डिंग टेस्ट, ये है रिगार्डिंग टेस्ट। एंड टेस्ट के बाद देयर आर सम प्रोजेक्ट्स, पाइथन कोर्स अबाउट प्रोजेक्ट बेस्ड पाइथन, तो यहाँ आपको प्रोजेक्ट भी मिलेगा। आपको अपना कोर्स जैसे आगे बढ़ते जाएगा वैसे आपको एक एक प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करना होगा, एंड दिस प्रोजेक्ट्स विल एक्चुअली बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स रहेंगे,
आर टारगेट इसकी कोर्स खत्म होते होते कम से कम 8 से 10 प्रोजेक्ट्स हम लोग कवर करें, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बेस्ड ऑन द टॉपिक्स दैट वी आर लर्न। कोई वेब एप्लीकेशन कंपनी के लिए डिजाइन नहीं करना है, बट जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है उस कॉन्सेप्ट को रीइंफोर्स करने के लिए एक एग्जाम्पल, एक टेस्ट, जैसे छोटे छोटे एप्लीकेशन ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स रहेंगे, दोस प्रोजेक्ट्स यू हैव टू कंप्लीट। सो दैट्स अबाउट दिस ई लर्निंग पोर्टल। प्लस अभी इस कोर्स में हमें कई सारे सॉफ्टवेयर चाहिए, तो आई विल मेक ऑल द सॉफ्टवेयर अवेलेबल टू यू। आपको ये सॉफ्टवेयर सिर्फ डाउनलोड करके इंस्टॉल यूज करने हैं। सपोज there is a I'll be sharing a link with you, and this link will have all the latest softwares which are there. This link will have all the latest softwares which are there. आपको ये डाउनलोड करने हैं, मेरे वीडियोस भी है हाउ टू इंस्टॉल देम। सॉरी ये नहीं, पाइथन सॉफ्टवेयर कलेक्शन करके एक लिंक मैं आपके साथ शेयर करूंगा। यहाँ आओगे तो वॉट एवर सॉफ्टवेयर दैट वी रिक्वायर एंड प्लस द टेक्स्ट बुक्स दैट आई वांट यू टू यूज एज अ रेफरेंस, मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाला। तो कोई बुक नहीं खरीदना है, कुछ नहीं करना है, नोटबुक खरीदना है, टेक्स्ट बुक नहीं। ओके, तो ये सारे सॉफ्टवेयर भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इंक्लूडिंग द बुक्स एंड एवरीथिंग, एडिशनल नोट्स। मेरे तो नोट्स है ही, प्लस सम एडिशनल बुक, बिकॉज पाइथन इज वास्ट। तो देयर विल बी, आई विल टेक से एग्जांपल्स ऑफ 20 डिफरेंट लाइब्रेरीज। अरे पहली पाइथन में 200 के ऊपर लाइब्रेरीज है। अभी 200 लाइब्रेरी थोड़ी ना कोर्स में कवर कर सकते हैं हम लोग, तो इंपॉर्टेंट जो रहेंगे आई विल ट्राई एंड कवर इट अप। बाकी कैसे यूज करना सिखाऊंगा आपको, तो बाकी की लिस्ट में तो चाहिए ना आपको। तो यस, यहाँ सारा लिटरेचर आपको मिल जाएगा। आपको ये डाउनलोड करना है, करीब 2 GB का कलेक्शन है, आपको डाउनलोड करना है। ऑल द रिसोर्सेज आर अवेलेबल विद यू, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। कोई डाउन यहाँ वहाँ ढूंढना नहीं है, क्या सॉफ्टवेयर पढ़ूँ, कौन सा बुक पढ़ूँ, नथिंग। आई विल बी शेयरिंग दिस लिटरेचर विद, एंड आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेरीज। तो आई वेलकम क्वेश्चंस। जब भी कोई डाउट है, द बेस्ट टाइम टू आस्क अ क्वेश्चन इज व्हेन द क्वेरी कम्स योर माइंड, तभी क्लैरिफाई करके लेना है, एंड दैट्स हाउ वी प्रोसीड। Language is no barrier for me. I am equally comfortable with English, Hindi, Marathi. I can also understand Gujarati. So you can talk to me in any of those languages. Languages are just means of communication. Our preferred language will be English during the communication. But कोई जरूरी नहीं कि हम लोग English में बात करें. Whichever language you are comfortable, you can ask me a question. At any point of time, you find me speaking fast, or you couldn't hear me, or you just get lost. I mean, कभी कभी होता है, ऑनलाइन में कई बार होता है, हम गुम हो जाते हैं कहीं तो बीच में, एंड देन बाद में अरे कहाँ चल रहा है, क्या चल रहा है। डू नॉट हेजिटेट टू आस्क मी अगेन। ये जो लेक्चर चलते हैं, इनकेस आपको रिवाइज करना है, कोई किसी दिन ऑनलाइन भी अटेंड नहीं कर पाया आप, यू जस्ट हैव टू सेंड मी अ मेल, यू विल गेट अ वीडियो लिंक रिकॉर्डिंग फॉर दैट लेक्चर एज वेल। वो आप रिप्ले करके देख सकते हैं। ऑनलाइन अटेंड करना, बट ये नहीं हो सर रोज दे, नहीं, यू नीड टू बी रेगुलर। आई टेल यू व्हाई, इट्स नॉट द वीडियो लेक्चर्स दैट वी आर रनिंग राइट नाउ। अगर ये वीडियो लेक्चर्स होते ना, तो आप बाद में आराम से कभी भी देखते तो अच्छा था, बट दीज आर कहा गया, these are actually live sessions now since these are live sessions, live का कोई तो एडवांटेज उठाइए ना, खुद को कमिट कीजिएगा कि रोज 5:30 बजे, अल्टरनेट डे 5:30 बजे में वो पाइथन के लिए डिवोट कर रहा हूँ मुझे टाइम। तो जब हम लोग टाइम डिवोट करके पढ़ते हैं ना, देन लर्निंग हैपेंस। अगर आप ऐसे सोचे ना, हाँ मला संध्याकाळी झोपायच्या आधी 1-1.5 तास वेळ आहे, त्यावेळी मी व्हिडिओ ऐकेल, इट नेवर हैपेंस। हाँ, डेडिकेटेड टाइम देना होता है उसके लिए, एंड देन व्हेन यू कमिटमेंट और भी स्ट्रांग होता है जब क्लासरूम में आते हैं। दैट मीन्स उसके लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं आप इन टर्म्स ऑफ एफर्ट्स, गाड़ी चालवायचे, बस पकडायचे, एंड दैट शोज योर ईगरनेस टू लर्न। सो बेस्ट पार्ट इज इफ यू कम डाउन हियर, बट इवन इफ यू आर एट होम, डोंट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ वाचिंग द वीडियोस लेटर, बिकॉज वीडियो में आपको आंसर करने वाला कोई नहीं रहेगा। मेक इट अ पॉइंट, अगर किसी वजह से पाउस पड़ रहा है, यू कैन नॉट मेक इट, बट मेक इट अ पॉइंट, देन यू सी दैट वीडियो, मींस अटेंड द लेक्चर ऑन लाइव देयर एंड देयर इटसेल्फ। Okay, so commit yourself for this course. This 72 hours that you'll be committing, my promise to you is, if you follow what I say, you will definitely gain confidence. मैं नहीं कह रहा हूँ कि दुनिया के सबसे एक्सपर्ट प्रोग्रामर बने, कोई नहीं बनता 72 आवर्स में एक्सपर्ट प्रोग्रामर, बट यू विल बी ऑन द राइट ट्रैक। आपको मालूम रहेगा कि प्रोग्रामिंग में क्या जरूरी है, कैसे करना है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, व्हाट आर द राइट रिसोर्सेज, कैसे पढ़ना चाहिए, वो मेरी जिम्मेदारी, हाउ टू लर्न। एटलीस्ट आई विल मेक श्योर दैट यू आर कॉन्फिडेंट। इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन की बात करें तो पहले 2 लेवल के पेपर क्लियर कर पाओगे, उतना तो पाइथन में आपको जरूर पढ़ाऊंगा। लेटर इफ यू आर इंटरेस्टेड, यू कैन कम इन फॉर एडवांस पाइथन एज वेल। दैट्स अनदर कोर्स दैट वी टेक, वेयर वी लुक इनटू एप्लीकेशन, एम्बेडेड, वेब, ऐसे अलग अलग एरियाज के 5 डिफरेंट एरियाज के एप्लीकेशन हम लोग सिखाते हैं। बिकॉज मालूम नहीं ना हम लोग इंडस्ट्री में कहाँ जाने वाले आगे, तो वी कवर अप 5 डिफरेंट जोन्स एंड 5 एरियाज में पाइथन कैसे यूज किया जाता है इज व्हाट वी टीच। सो यू आर मोस्ट वेलकम फॉर एडवांस पाइथन कोर्स एज वेल। सो वी आर ऑलरेडी लेट 7:06, so we'll stop here today. I hope to see you in the next session. Admission लीजिएगा, once you take an admission, all these resources will be available, and we continue alternate days. Okay.
This is just the beginning. I'll be having one more session for just to get in some more students. So next lecture कब रहेगा? You'll be intimated. You'll be intimated. Thank you all for attending the session. If you have any queries, please ask. मैडम बात कर सकते, मैडम बताएंगे आपको. Regarding fees, anything? Regarding Python, कुछ पूछना है, करियर के बारे में कुछ बात करना है, ऋषिकेश इज देयर. ओके, ऍडमिशन सर, नोट्स सापडत नाहीये, लॉग इन होत नाहीये, कनेक्ट करायचंय सर, पासवर्ड विसरलोय. You can talk to your office. Okay. Thank you all for the session. Okay. Any change that you would like me to do in the session? Fast लगा, slow था, चलेगा ना? लैंग्वेज का कोई इश्यू है किसी को? हाँ, आणि मला 3 लँग्वेज अगदी व्यवस्थित येतात का? हिंदी, इंग्लिश, मराठी. हा, देशमुख आहे, लहानाचा म्हणजे मराठीच आहे, हा, साताऱ्याकडचा आहे, काही मराठीची अडचण नाही मला. ओके. इंग्लिश तो ब्रेड एंड बटर है. ओके, आना ही चाहिए. हिंदी नेशनल लैंग्वेज है हमारे लिए, मूवी देख देख के सीखा है. ओके, तो हिंदी 3 लैंग्वेज आई एम वेरी कंफर्टेबल, एंड माय नेबरहुड देयर आर गुजरातीज, सो आई आल्सो अंडरस्टैंड गुजराती वेरी वेल. So you can speak to me in any of those 4 languages. So you should not have hesitation. ना, मी आत्ता विचारला असला सिली प्रश्न, आदिती माझ्याविषयी काय विचार करेल, काही आपल्या आदितीसाठी नाही आलं पायथन शिकायला नाही. ठीक आहे, तो वी शुड बी ओपन, अँड दिस इज द बेस्ट प्लेस वेर यू कॅन फेल. मीन्स आस्क क्वेश्चन्स, यू गो रॉंग, आय स्कोल्ड यू. ती देखील घटना आपल्या आयुष्यावर लक्षात आहे ना, त्या दिवशी मी असा प्रश्न विचारला होता, सर मला रागवले, पण तो टॉपिक लक्षात होता. सो मेक शुअर डू नॉट हेजिट टू आस्क क्वेश्चन्स. दॅट्स द ओनली वे टू लर्न. थँक यू ऑल. Bye-bye. See you next time. Good night. Thank you, all of you, for attending the session online. See you next time. We'll intimate you about the next batch. Those who are there online, any problem that you had? Any suggestion? Yes, Shivani? No, sir. Okay. So I hope you understood. Give me a quick feedback. वहाँ देखो नीचे feedback दिखाई देगा आपको. Understood, not understood. Give me a quick feedback वहाँ. रिएक्शन है देखो. निखिलेश has given a thumbs up. Thank you, निखिलेश. बाकी लोग? Okay, thank you, Gauri. Thank you, Parag. I hope Atharva and Shivani is also understood. Okay, we'll stop here today. My next batch is waiting. Thank you all. Bye-bye. Love you all. Good night.